चालू कर दो। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। एक मैडम जाओ से Now I hope you're able to hear me. Just confirm that. Are you able to hear me? Thank you so much. Now, friends, I, on behalf of JK classes, welcome you all for an accounts marathon session. Today we'll cover all the important chapters which are required for tomorrow's exam. I'm sure you all would have prepared well. Let's work together to make tomorrow's exams very comfortable. Just be with me throughout the session. Go on understanding how we solve the question and go about the paper. So without wasting much time, let's start the session. Now, so let's begin the session with our first chapter, that is rectification of errors. Now, rectification of errors. We'll start and let's move ahead with that. Now, first is, we'll start with rectification. I hope you are ready. You all would have got the material also. Now, without wasting much time, first is path rectification entries. So let's चलते हैं यहाँ पर हम लोग rectification of errors. Rectification of errors.
Solution to question 1. We'll divide into 3 parts. First page, that is wrong entry, correct entry, reverse of wrong entry, and rectified entry. Charters, this 3, you do it on the left hand side of your page. First 3 columns, working note on the left hand side of your page, and rectified entry on a fair page, which आपको जो journal के format में देने का. So this you're supposed is your fair answer. This is your working note. This should be in journal format, that is date, particulars, amount, debit, credit. Date, particulars, debit, credit, you are supposed to give. Now, working note mandatory nahi hai exam mein. Working note is not mandatory in the exam. Correct? First transaction, past rectification entries assuming the errors are rectified after preparation of trial balance. After preparation of trial balance, matlab we are supposed to use suspense account to rectify. Correct? Now, first is return outward book. Return outward matlab purchase return. Purchase return was undercast by 909. भाई परचेज रिटर्न को हमने डिक्रीज कर दिया है 909 से, तो ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज परचेज रिटर्न. करेक्ट. सो वी हैव reduced purchase return with 909. So we are supposed to increase purchase return with 909. Purchase return क्या है? Purchase return is nothing but income. Income को we are supposed to increase. करेक्ट है ना भाई? इनकम को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे आप? सर इनकम को इंक्रीज करने के लिए वी विल क्रेडिट. तो टू परचेज रिटर्न 909, टू परचेज रिटर्न 909 इनकम को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करेंगे. क्या ये जर्नल एंट्री कंप्लीट है? कैन यू सी द स्क्रीन? परचेज रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट. यस. डेबिट में कुछ है क्या? नहीं. तो डेबिट में क्या यूज करेंगे? सस्पेंस. वेरी गुड. थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स. 909 सस्पेंस टू परचेज रिटर्न. करेक्ट है. दूसरी जर्नल एंट्री, सेकेंड जर्नल एंट्री चार्टर्ड क्या है? ₹5400 रिसीव्ड फ्रॉम ए. Received 5400 from Mr. A was posted to the debit of his मतलब A's account. भाई 5400 A से मिला. अगर 5400 चार्टर्ड A से मिला, अगर 5400 हमें A से मिला, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बताओ फटाफट. करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सर कैश टू A. Correct entry should have been cash to A 5400. 5400 करेक्ट है. हाँ जी. नाउ चार्टर्ड was posted to the debit of his account. मतलब कैश में कोई गलती नहीं है. there is no error in the cash. error is only in A. कैश में if there is no error, तो कैश हमने 5400 लिख दिया as it is. करेक्ट इनकरेक्ट? कैश लिख दिया एज इट इज 5400. ए को क्रेडिट करना चाहिए था. रॉन्गली वी हैव डेबिटेड इट. तो ए अकाउंट डेबिट 5400.
एम आई क्लियर? ए अकाउंट डेबिट 5400, मतलब दोनों डेबिट हो गए। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री मतलब गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को क्रेडिट। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री मीन्स वी आर ट्राइंग टू nullify the error. Wrong entry was cash account debit, A account debit. Correct? To rectify that, what we will do? We'll credit both. Up chartered, combine these two entries. Combine these two entries. Correct? So, cash credit, cash debit. Got nullified? Cash credit, A credit, A credit. दोनों को क्रेडिट करना है. Yes. तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी 2A 10,800, 2A 10,800 डेबिट में कुछ नहीं है. टू कंप्लीट द जर्नल एंट्री व्हाट वी विल डू? टू कंप्लीट द जर्नल एंट्री व्हाट वी विल डू? सस्पेंस. 10,800. करेक्ट. टू कंप्लीट द जर्नल एंट्री विल डेबिट. बरोबर. नंबर सी, ध्यान से देखिए. ₹2740 पेड फॉर रिपेयर्स टू मोटर कार. मोटर कार के रिपेयर के लिए खर्चा किया. तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर्स टू कैश. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर्स टू कैश वॉज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट. गलती से हमने क्या कर दिया? मोटर कार को डेबिट कर दिया. तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? मोटर कार टू कैश. आर यू अंडरस्टैंडिंग? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर्स टू कैश. करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स टू कैश 2740. रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी? वी डेबिटेड मोटर कार. बट चार्टर्ड मोटर कार को 2740 की जगह हमने डेबिट कर दिया 1740. करेक्ट. और टू कैश, कैश में देर इज नो एरर, तो कैश रिमेन्स 2740 एज इट इज. करेक्ट है ना? कैश रिमेन्स 2740 एज इट इज. चलिए, रिवर्स ऑफ रॉन्ग. कैश 2740 टू मोटर कार 1740. करेक्ट. हाँ. नाउ चार्टर्ड इस दोनों को कंबाइन करते हैं तो कैश कैश कैंसिल हो जाएगा. रिवर्स ऑफ रॉन्ग और करेक्ट को कंबाइन करेंगे तो रेक्टिफाइड एंट्री विल कम. रिवर्स ऑफ रॉन्ग और करेक्ट एंट्री को कंबाइन करेंगे चार्टर्ड तो वी विल गेट रेक्टिफाइड एंट्री. रिवर्स ऑफ रॉन्ग और करेक्ट एंट्री को इफ वी कंबाइन देन विल गेट रेक्टिफाइड एंट्री. तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट. रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 2740 टू मोटर कार 1740. करेक्ट. ये एंट्री कंप्लीट है? नहीं. कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट में 1000 लिखना होगा. हाँ जी, 1000 क्या करेंगे? सस्पेंस. मतलब बात को समझिए, अगर एंट्री कंप्लीट नहीं होगी तो सस्पेंस यूज करेंगे. अगर एंट्री कंप्लीट नहीं होगी, इफ द जर्नल एंट्री, इफ द रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री इज नॉट कंप्लीट देन ओनली वील यूज. if the rectified journal entry is not complete then we'll use suspense account. if it is complete तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. am I clear? तो ये जर्नल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए वी हैव यूज्ड सस्पेंस अकाउंट. टू कंप्लीट द जर्नल एंट्री वी हैव यूज्ड सस्पेंस अकाउंट. am I clear? yes sir. एंट्री नंबर डी. डी क्या है? 25,000 पेड टू हरी अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स पेबल. 25,000 we have paid to Hari against bills payable was debited to whose account? Harish's account. Was debited to whose account? Harish's account. तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वी आर पेइंग अगेंस्ट एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स पेबल. यस. तो बिल्स पेबल टू बैंक. बिल्स पेबल टू बैंक हाउ मच? 25,000. 25,000. करेक्ट. गलती से क्या कर दिया?
हरीश को क्रेडिट कर दिया, हरीश को डेबिट कर दिया, तो वी रोट हरीश टू बैंक. हरीश टू बैंक हाउ मच? 25,000. 25,000. तो रिवर्स ऑफ रॉन्ग विल बिकम बैंक to Harish. Instead of bills payable debiting, we have debited what? Harish. Instead of debiting bills payable, we have debited what? Harish. Reverse of wrong karo, bank to Harish. If you combine this, bank cancels, rectified entry will be bills payable 25,000 to Harish. Bills payable 25,000 to Harish. 25,000. बोलो yes or no? Correct है, बात समझ में आ रही है? Are you understanding? Bills payable to Harish. Is this a complete entry? क्या ये entry complete है? Yes. Thank you, Shivam, Manav, Akanksha, Lakshit. Thank you so much. Now, entry number E. Entry number E. Lakshit, thank you. Now, chartered. Bills received from Janki. Bills received from Janki मतलब bills receivable वाला bill नहीं है ये. Bills received from Janki for repairs done to radio. हमने रेडियो रिपेयर करवाया, हमने रेडियो रिपेयर करवाया, वी गॉट अ रेडियो रिपेयर्ड, दैट्स वाई जानकी ने इनवॉइस दिया है, दैट इज बिल 2,500. और रेडियो सप्लाई किया कितने का? 46,000, 45,000. तो रिपेयर का 2,500, रेडियो का 45,000 हमें जानकी को देना है. तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए रिपेयर अकाउंट डेबिट 2,500, रेडियो अकाउंट डेबिट 45,000, और टू जानकी, जानकी को वी आर सपोज टू पे 47,500. करेक्ट एंड करेक्ट, जानकी को वी आर सपोज टू पे 47,500. बट चार्टेड पूरा क्वेश्चन कह रहा है were entered in purchase book as 46,000. करेक्ट है ना? परचेज बुक में एंट्री पास कर दी 46,000 की. परचेज बुक की जर्नल एंट्री होती है पर के परचेजेस टू जानकी हाउ मच? 46. इज दिस क्लियर? यस और नो? नो. तो रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, थैंक यू विघ्नेश. रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री जानकी 46 टू परचेजेस 46. करेक्ट इन करेक्ट करेक्ट. नाउ इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो रिपेयर्स 2,500, रेडियो 45,000. पर जानकी को क्रेडिट करना चाहिए था 47,500 से, बट जानकी को क्रेडिट किया ओनली 46 से. सो वी शुड फर्दर क्रेडिट जानकी बाय 1,500. वी शुड फर्दर क्रेडिट जानकी बाय 1,500. repairs debit, radio debit. Correct. Janki ko we are supposed to pay 47,500. But entry we have passed purchases to Janki. Correct. 46. Purchases को गलती से डेबिट कर दिया, क्रेडिट करेंगे. Two purchases. How much? 46,000. Is this entry correct? Yes. Again, I am saying repairs debit. We should have debited. Radio we should have debited. Correct है ना? हाँ. जानकी we should have credited how much? 47,500, but we have credited only 46. मतलब 1,500 हमने जानकी को कम क्रेडिट किया और कर दिया क्रेडिट. परचेसेस वी हैव रॉन्गली डेबिटेड, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट कर दिया. करेक्ट. थैंक यू लक्ष्य. नाउ चार्टर्ड आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर ई. नाउ नहीं, अलग अलग नहीं कर सकते. नाउ चार्टर्ड a check of rupees 750 received for loss of stock has been deposited in proprietor's private bank account. प्रोप्राइटर के प्राइवेट बैंक अकाउंट में 750 का जो चेक मिला वो डिपॉजिट कर दिया. किससे मिला? इंश्योरेंस कंपनी से.
तो इंश्योरेंस कंपनी गेव मी 750 which I have deposited into proprietor's bank account. तो वो तो ड्रॉइंग्स हो गया. That is drawings, yes or no? F. तो correct entry drawings. And this money is received from whom? Insurance company. तो to insurance कितना? 750. Correct. Now, correct Vignesh. ये हट गया. This is gone. There is no wrong entry. This entry की posting only has not done. So there is no wrong entry. The rectified entry will also remain drawings to insurance 750, 750. Correct? Now, shall we move ahead? Are you all understanding? Yes, Laksh. Yes, Akansha. Thank you. Now, an item of purchase of 151. 151 ka we have purchased. Entered in purchase book as 15 and suppliers account as 51. Purchase किया how much का? How much की we purchased? 151. तो entry होनी चाहिए थी purchase 151 to supplier 151. Now, accountant ने क्या किया? Purchase में खाली 15 लिया. Purchase में he has taken only 15 and supplier में he has taken only 51. मतलब purchase में पहला दो फिगर लिया, supplier में लास्ट दो फिगर ले लिया. सप्लायर में लास्ट दो फिगर ले लिया. परचेज में पहला दो फिगर 15. सप्लायर में लास्ट दो फिगर 51. करेक्ट. रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री. सप्लायर 51 टू परचेजेस 15. इज दिस क्लियर? यस और नो? कंबाइन करो दोनों. परचेज डेबिट करना चाहिए था 151 से, बट वी हैव डेबिटेड ओनली 15. तो फर्दर डेबिट परचेजेस Pushti, correct. Further debit purchases by how much? 136. Supplier I should have credited with 151, but I have credited only 51. So further credit supplier how much? 100. Is this entry tallying? No. So what we'll write? Suspense. Are you all understanding? Yes or no? Correct. Sir, we have understood this. Correct. Thank you so much. Mayank. Yes. Now. Sir, ये रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री करना जरूरी है. वर्किंग कोई भी करना जरूरी नहीं है. अच्छा सर, आपका नाम क्या? नाम इज दीपेश सर. नाउ चार्टर्ड लास्ट. An amount of rupees 350 received in full settlement from a customer after he was allowed a discount of 50. 300 received from a customer after he was allowed a discount. करेक्ट. हाँ जी. तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वी हैव रिसीव्ड 300. Discount we have given 50 to customer. बट पता है, यू नो अकाउंटेंट ने क्या किया? नाउ एक के बाद एक चैप्टर हर्षिनी हम लोग करते जाएंगे. सम्स वी विल कीप ऑन डूइंग एंड वेर एवर इंपॉर्टेंट थियोरी इज रिक्वायर्ड वो मैं आई विल कीप ऑन टेलिंग यू. करेक्ट हर्षिनी. 350 300. अकाउंटेंट ने क्या किया पता है? कैश एंड डिस्काउंट अलाउड का फिगर इंटरचेंज कर दिया. तो कैश में ही रोट 50, डिस्काउंट अलाउड में ही रोट 300 टू कस्टमर. हाउ मच? 350. रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री. कस्टमर 350 टू कैश 50 टू डिस्काउंट अलाउड 300. कंबाइन दिस. कैश को डेबिट करना चाहिए था 300 से. We have debited cash with only 50. Further debit cash with 250. करेक्ट है ना? बात समझ में आ रही है? यस यस. डिस्काउंट अलाउड सर ये सब इजी है. वी आर चैंपियन इन ऑल दिस. डिस्काउंट अलाउड 50.
डेबिट कर दिया 300, तो एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, तो वी विल क्रेडिट, करेक्ट है ना? हाँ सर। सर, यू नो, आफ्टर दिस, आदित्य, करेक्ट, आफ्टर दिस आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है। हाँ हाँ, चलो चलो, विल प्रिपेयर फटाफट सस्पेंस अकाउंट, विल प्रिपेयर फटाफट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। सर, ओ सर, व्हाई डिड यू स्टार्ट विद रेक्टिफिकेशन? पहले बेबी चैप्टर से स्टार्ट करते, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। ना, करेक्ट। नाउ चार्टर्ड, नाउ चार्टर्ड फर्स्ट जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री में सस्पेंस है, सस्पेंस डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो टू परचेज रिटर्न, हाउ मच? 909, टू परचेज रिटर्न 909, सेकेंड सस्पेंस टू ए, तो टू ए, टू ए, एच में क्या हुआ ना, कैश में 300 की जगह 50 लिख दिया, तो 250 कम लिखा तो डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड में 50 लिखा, 300 की, 50 की जगह 300 लिख दिया, दैट मींस वी हैव रिकॉर्डेड डिस्काउंट अलाउड में एक्स्ट्रा 250 डेबिट, तो रेक्टिफाई करने के लिए वी हैव क्रेडिटेड, करेक्ट है कुणाल सी? तो टू, टू ए 10,800, फिर रिपेयर, बाय रिपेयर 1,000, बाय रिपेयर्स 1,000, मोटर कार वाली एंट्री, बाय, एफ में तो कुछ है ही नहीं ऋषभ, बाय परचेजेस, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए, इंश्योरेंस कंपनी गेव मी मनी, जो मैं घर ले गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दिया, वॉट एवर मनी ही गेव वो घर ले गया, तो ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया, परचेजेस 36। नाउ चार्टेड, इसका ओपनिंग बैलेंस मिसिंग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फटाफट मुझे बताओ कि ओपनिंग बैलेंस कितना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस 10,800,909, करेक्ट सैमसंग, 10,673, ओपनिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर आ गई, करेक्ट प्रीत। चलिए, करेक्ट चार्टेड, क्वेश्चन नंबर 2, the following errors affecting the account for the year were detected in the books of Jain brothers, ठीक है, ये सारे एरर डिटेक्ट हुए, करेक्ट। You are required to pass the necessary rectifying entries and show how trial balance will be affected by errors. How trial balance will be affected by errors. ठीक है, करेक्ट। A return of, नहीं है पीएल एडजस्टमेंट का बैलेंस इज ट्रांसफर टू, पीएल एडजस्टमेंट का बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल। वो मॉड्यूल में जो सम किया ना, उसमें बोला है कि पीएल एडजस्टमेंट की जगह सस्पेंस ट्रायल बैलेंस में डाल दिया था। इलिस्ट्रेशन 8 में मॉड्यूल में पीएल एडजस्टमेंट की जगह सस्पेंस लिख दिया था ट्रायल बैलेंस में, इसीलिए ना। अ रिटर्न ऑफ 120, अ रिटर्न ऑफ 120
Now, a return of 120 from Mukesh was posted to his debit. The return of 120 from Mukesh. Solution to question 2. ठीक है ना हेतु? Wrong entry. Correct entry. Reverse of wrong entry. Rectified entry. Now, a return of second question. Second question rectification का. फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब नहीं, आपको बुक मिला होगा, सारी पोस्टिंग हो गई. 909, 10,801 सब पोस्ट कर दिया हमने. चलो, मैं जीके शाह बुक से नहीं, आप लोग को रिवीजन मटेरियल मिला होगा. रिवीजन मटेरियल, उसके सेकंड क्वेश्चन है ये. अच्छा, हाँ, रिवीजन मटेरियल का ए. सेल ऑफ फर्नीचर ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स. करेक्ट ना? सेल ऑफ फर्नीचर ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स. बताओ चार्टर डायरेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? सेल ऑफ फर्नीचर ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स. तो करेक्ट एंट्री विल बी कैश टू फर्नीचर. हाउ मच? 150, 150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, तो कैश टू सेल कर दिया. तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? 150, 150. Sales how much? 150. To cash how much? 150. Correct? Cash, cash cancel. Sale to furniture. 150. Thereafter. Second क्या है? Receipt of ₹500 from राम मोहन. राम मोहन से पैसा मिला. राम मोहन. The entry will be cash. YouTube में होगा. Cash to राम मोहन. Notes YouTube में होंगे. राम मोहन. How much? 500, 500. टेलीग्राम में भी. टेलीग्राम लिंक में भी आएगा. ना, thereafter लिख दिया किसमें? कैश टू श्याम सुंदर. श्याम सुंदर 500. रिवर्स श्याम सुंदर टू कैश 500, 500. कैश कैश कैंसिल. श्याम सुंदर टू राम मोहन. हाउ मच? 500, 500. करेक्ट एंड करेक्ट. इलस्ट्रेशन 8 ऑफ इंस्टीट्यूट मटेरियल में बैलेंस ऑफ सस्पेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल बिकॉज instead of PL adjustment in that question they have stated that question is stated to be उस क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ PL एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन. ठीक है ना? चलो नंबर सी. सी क्या बोलता है? 3 गुड्स वर्थ ₹100 बॉट फ्रॉम मोहन नारायण रिमेन अनरिकॉर्डेड. तो परचेज अनरिकॉर्डेड है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज टू मोहन नारायण. परचेज टू मोहन नारायण कितना? 100, 100. आगे बढ़े, बढ़ो. 9.
A return of 120 from Mukesh posted to his debit. A return of 120 from Mukesh. Mukesh से return हुआ तो journal entry will become sales return to Mukesh. Sales return to Mukesh 120 120. Correct? नहीं, कोई मिस्टेक नहीं आएगा. Was posted to the debit of Mukesh. तो सेल्स रिटर्न को तो डेबिट किया, मुकेश को भी डेबिट कर दिया 120. सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, मुकेश को भी डेबिट कर दिया. तो रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री टू सेल्स रिटर्न 120 टू मुकेश 120. करेक्ट. सेल्स रिटर्न कैंसिल हो जाएगा. करेक्ट. तो क्रेडिट मुकेश कितना, हाउ मच टू बी क्रेडिटेड फॉर मुकेश 240. डेबिट किसको करूं, कुछ नहीं. तो जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस. करेक्ट. जहां कोई नहीं है वहां पर सस्पेंस डाल दो टैली करने के लिए. ई. A return of 90 from Shyam Sundar posted as ₹9 in his account. श्याम सुंदर से रिटर्न आया. श्याम सुंदर से रिटर्न आया तो जर्नल एंट्री विल बी व्हाट, श्याम सुंदर टू परचेज रिटर्न. श्याम सुंदर टू परचेज रिटर्न. हाउ मच, 90 90. एम आई क्लियर? श्याम सुंदर टू परचेज रिटर्न 1990. करेक्ट. श्याम सुंदर में इंस्टेड ऑफ 90 सिर्फ 9 लिखा. परचेज रिटर्न में 90. रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री. परचेज रिटर्न 90 टू श्याम सुंदर 9. करेक्ट ना. तो श्याम सुंदर में 90 की जगह सिर्फ 9 डेबिट किया, तो श्याम सुंदर में और 81 डेबिट करो. करेक्ट विश्वा. टू सस्पेंस 81. आप लोग तो ऑलरेडी चैंपियन हो. नाउ नेक्स्ट, रेंट ऑफ प्रोपराइटर्स रेसिडेंस ₹600 डेबिटेड टू रेंट. रेंट ऑफ प्रोपराइटर्स रेसिडेंस, प्रोपराइटर का रेसिडेंस का रेंट था, तो वो तो घर का रेंट, दैट इज पर्सनल एक्सपेंस, तो वो तो ड्राइंग होना चाहिए, दैट शुड बी ड्राइंग्स. ड्राइंग्स टू कैश 600 600. करेक्ट एंड करेक्ट. रॉन्ग एंट्री इज रेंट टू कैश 600 600. रेक्टिफाइड एंट्री विल बी व्हाट, ड्राइंग्स को डेबिट करो, रेंट को रॉन्गली डेबिट कर दिया था, क्रेडिट करो. रेंट वॉज रॉन्गली डेबिटेड, क्रेडिटेड. यस और नो? यस. उसके बाद पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक. पेमेंट किया मोहम्मद सादिक को, तो एंट्री पास करनी चाहिए थी, एंट्री पास करनी चाहिए थी मोहम्मद सादिक टू कैश. एंट्री वी शुड हैव पास्ड इज मोहम्मद सादिक टू कैश 215. करेक्ट. और ओवर हियर आई शुड हैव पास द एंड, बट हमने दोनों को क्रेडिट कर दिया. वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, तो मोहम्मद सादिक को क्रेडिट कर दिया. बट मोहम्मद सादिक को वी हैव क्रेडिटेड, बट क्रेडिटेड हाँ चलेगा वो 125. करेक्ट है ना? यस नो? मोहम्मद सादिक को डेबिट करने की जगह वी हैव क्रेडिटेड, बट 215 की जगह 125 वी हैव रिटन. तो रिवर्स ऑफ रॉन्ग, मोहम्मद सादिक 125 टू कैश 215. कैश कैश कैंसिल. मोहम्मद सादिक डेबिट डेबिट ऐड कर दो. मोहम्मद सादिक कितना हो गया, 340. ओ माय गॉड. टू सस्पेंस 340. करेक्ट. यस. देयर आफ्टर सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट. तो सेल्स को बढ़ाना है, सेल्स को बढ़ाना है. सेल्स इज इनकम, इनकम को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट. सेल्स इज इनकम, इनकम को क्रेडिट
इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट, डेबिट में नथिंग इज देयर, तो सस्पेंस टू सेल्स, करेक्ट है ना, सस्पेंस टू सेल्स। फिर टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 अनपोस्टेड, मतलब बिल्स रिसीवेबल बुक इज ऑल्सो अंडर कास्ट बाय 1500। बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, एसेट को इंक्रीज करना होगा 1500 से, एसेट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट टू सस्पेंस। सर दिस क्वेश्चन इज देयर इन इंस्टीट्यूट मटेरियल, यस, बिल रिसीवेबल टू सस्पेंस। नाउ चार्टर्ड, कहानी में ट्विस्ट, वी आर सपोज टू शे इंपैक्ट इन ट्रायल बैलेंस। अब देखो, listen to this very carefully, impact of every entry in trial balance we are supposed to see। तो सेकेंड एंट्री में इट इज सस्पेंस टू राम मोहन, तो सस्पेंस डेबिट हुआ 500 से। अगर सस्पेंस 500 से डेबिट हुआ है, मतलब ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस क्रेडिट साइड था, यस, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस क्रेडिट साइड था, तो डेबिट वाज ग्रेटर देन क्रेडिट बाय 500, करेक्ट है ना, यस नो। सिमिलरली फिर सेल्स रिटर्न टू मुकेश, सस्पेंस टू मुकेश, सस्पेंस डेबिट में है, सस्पेंस डेबिट में है। नाउ चार्टर्ड, अगर सस्पेंस डेबिट में है तो आप क्या करोगे? बोलो। नाउ we are supposed to show what was the impact of error in trial balance, what was the impact of error in trial balance। इधर देखो, सस्पेंस यहां पे डेबिट हुआ, तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस क्रेडिट साइड होगा, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस क्रेडिट साइड मतलब डेबिट ज्यादा था, करेक्ट। फिर सस्पेंस टू मुकेश, करेक्ट, सस्पेंस टू मुकेश। नाउ ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट, ये क्रेडिट, करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट। नाउ सेकंड क्या होगा बताओ? फर्स्ट इज डेबिट शॉर्ट बाय 500, यस और नो? फर्स्ट इज डेबिट शॉर्ट बाय 500, यस सर नो सर? नहीं श्रीवंती, सॉरी श्याम सुंदर टू राम मोहन, इसमें सस्पेंस नहीं है। परचेज टू एमएन में सस्पेंस टू मुकेश, नाउ सस्पेंस यहाँ पे डेबिट है तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में होगा, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में है सस्पेंस, तो डेबिट इज मोर और क्रेडिट इज मोर, बताओ। ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस डेबिट में है तो डेबिट इज मोर और क्रेडिट इज मोर? डेबिट इज मोर, करेक्ट, यस नो? करेक्ट, उसके बाद थर्ड वाला बताओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा बताओ? क्रेडिट इज मोर, इधर देखो, ये वाला हो गया। फिर इसमें
सस्पेंस इज ऑन द क्रेडिट, मतलब ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट साइड होगा। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड है तो क्रेडिट इज मोर, करेक्ट। ट्रायल बैलेंस में अगर वो क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है, दिस सस्पेंस इज देयर इन ट्रायल बैलेंस विच साइड? ट्रायल बैलेंस में दिस सस्पेंस इज ऑन डेबिट साइड। इफ इट इज ऑन डेबिट साइड दैट मींस क्रेडिट इज मोर। एम आई क्लियर? यस और नो? बोलो। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट वाला, करेक्ट। ये वाला में हमने बोल दिया डेबिट इज सेकंड वाला फर्स्ट, मुकेश वाला में क्रेडिट, मुकेश वाला में क्या था? और इधर देखो, यहाँ पे सस्पेंस इज ऑन द क्रेडिट, मतलब ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस विल बी ऑन डेबिट, यस और नो? ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस विल बी ऑन डेबिट, दैट मींस क्रेडिट इज मोर बाय 340। क्रेडिट इज मोर बाय 340, करेक्ट। क्रेडिट इज मोर बाय 340। इधर देखो, सस्पेंस डेबिट मतलब ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस क्रेडिट में था, सस्पेंस क्रेडिट मतलब डेबिट इज मोर बाय 900, डेबिट इज मोर बाय 900, करेक्ट। यहां पर सस्पेंस इज ऑन क्रेडिट, सस्पेंस इज ऑन क्रेडिट मतलब ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस विल बी ऑन डेबिट साइड, सस्पेंस विल बी ऑन डेबिट साइड, यस और नो? दैट मींस क्रेडिट इज मोर, अंडरस्टूड? यस और नो? डन। ऐसे इंडिविजुअल सेंटेंसेस यू आर सपोज टू राइट। चलिए, नाउ चैप्टर नाउ। नाउ shall we go to another chapter? BRS करें? Shall we do BRS? बोलो बोलो जल्दी। यस, चलो फटाफट फिर करते हैं हम लोग BRS। The following is the summary of cash book as presented to you for the month of December 17। Now, करेक्ट। मैं सीधे नोटबुक में चला जाता हूं, तो मुझे क्वेश्चन में बार बार आना नहीं होगा, क्वेश्चन आप लोग के पास होगा, करेक्ट। Now, the following is the summary of cash book presented to you. All receipts are banked and payments are made by check. All receipts are banked and payments are made by check. Correct? ठीक है। Balance brought down is how much? Balance brought down is 761। Now, लास्ट में चार्टर्ड दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो एडजस्टेड कैश बुक, adjusted cash book, or we are supposed to prepare BRS, करेक्ट। तो जब एडजस्टेड कैश बुक होता है तो याद रखना, एरर्स ऑफ कैश बुक विल कम हियर और एरर्स ऑफ पासबुक विल कम इन BRS।
Errors of cash book will go in adjusted cash book. Errors of passbook will come in BRS. Correct. Closing balance कितना है? सर क्लोजिंग बैलेंस है 554. सो हमने 554 से शुरू किया. करेक्ट है. विल स्टार्ट विथ 554. चलो. बैंक चार्जेस 136. करेक्ट. entered in the bank statement, had not been entered in the passbook. तो has not been entered in the cash book. तो cash book में bank charges will come where? Cash book में bank charges will come where? BRS का पहला क्वेश्चन है. सलोनी. Credit side, how much? 136. Correct. Thereafter, checks drawn amounting to 267. Drawn मतलब issued. Checks drawn, that is issued, 267 had not been presented to bank for payment. Check issue किया है तो पासबुक में check issued पासबुक में will come on which side? Not recorded in passbook. Check issue passbook में which side? Debit. How much? 267. Check issued passbook में not recorded. Debit side. Thereafter, checks drawn amount, third one, check received totaling 762. Check received totaling 762 had been entered in the cash book, and paid into bank but not credited by bank. मतलब error is in passbook. अगर error in passbook है बेटा, चेक रिसीव किया है, डिपॉजिट कर दिया. चेक रिसीव किया है, डिपॉजिट कर दिया, मगर that has not been recorded in passbook, recorded in cash book. So error is in passbook, error is in cash book, passbook. So it will come in BRS or it will come in BRS or it will come in adjusted cash book. It will come in BRS. Correct. BRS में किस side? Checks deposited credit side. Check deposited credit side will come. How much? 2762. Correct. Very good. Thereafter, a check of rupees 22 had been entered as a receipt in the cash book instead of payment. A check of rupees 22 had been entered as a receipt in the cash book instead of payment. Oh, galti is in cash book. Cash book mein debit side, a receipt of 20, a check of 22 had been entered as receipt. Tha payment. Entered as receipt in the cash book instead of payment. क्या करे? Correct. So I should have recorded on the credit side 22, but I have recorded on the debit side 22. तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें? पेमेंट 42. वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो. I should have recorded on 22 on which side? Payment side. But गलती से I have recorded 22 on receipt side. Correct. तो रेक्टिफाई करने के लिए I'll record 44 on the payment side. Yes or no? Yes, sir. आगे बढ़े. Thereafter charted. A check of rupees 25 had been debited by bank in error. बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाई error in passbook. Error in passbook. Passbook has wrongly debited. तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? Debited by bank in error. So we will credit it. Correct? No, Shubham. Thereafter, a check received for rupees 80 had been
returned by the bank and marked no funds available. A check of rupees 80 had been returned by the bank, marked no funds available, no adjustment has been made in the cash book. अच्छा, मतलब ये क्या हो गया? Checks deposited dishonored, yes or no? Checks deposited dishonored. Check deposited dishonored will come where? Credit side. Check deposited dishonored. How much? 25. Checks deposited dishonored. Amended cash book में credit side, yes or no? Now chartered. A check of rupees 80. A check of 25, 80. Now, all dividend receivable are credited directly to the bank account during December, amounting to 62, were credited by the bank and no entries were made in the cash book. मतलब इसका मतलब 80 रुपीज का डिविडेंड मिला है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. 80 रुपीज का डिविडेंड मिला है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. डिविडेंड 80. यस, नो. डिविडेंड 80, सॉरी 62. डिविडेंड 62. A check drawn मतलब issued, had for rupees 6 has been incorrectly entered in the cash book as 66. चेक इशू किया है. If you have issued the check chartered, इसका मतलब कैश बुक क्रेडिट साइड में आना चाहिए था. कैश बुक क्रेडिट साइड में 6 आना चाहिए था. कैश बुक क्रेडिट साइड में 6 आना चाहिए था. हमने लिख दिया 66 क्रेडिट साइड में. तो रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट में विल राइट चेक्स डिपॉजिटेड 60. Yes or no? Check issued. Error. Are you understanding? Yes or no? Credit side में I should have written how much? Credit side में I should have written how much? 6. But I have written how much? 66. So how much extra I have written? 60. So to rectify, I have to debit. Balance brought forward should have been 711. Credit side में eyes on the board, credit side में I have written opening balance as 761. बट क्वेश्चन इज सेइंग ये 761 नहीं 711 ही होना चाहिए था. तो डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में 50 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है कैश बुक में. सर वापस बताओ. बैलेंस मैंने लिखा है 761. क्वेश्चन इज वो 711 ही होना चाहिए था. मतलब क्रेडिट साइड में वी हैव रिटन एक्स्ट्रा 50. तो रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट 50. यस और नो? रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट 50. चलो फटाफट बताओ बैलेंस कितना है. क्लोजिंग बैलेंस. करेक्ट. क्लोजिंग बैलेंस कितना है? $642. 642. ये 642 ओवरड्राफ्ट बैलेंस. तो कैश बुक ओवरड्राफ्ट 642. चलो क्रेडिट का डेबिट का टोटल 267. क्रेडिट का टोटल बताओ. कौन सा वाला वापस बताओ. विच वन? विच धन्य? 711. 700. I have written on the question में 761 is printed, but it should be only 711. So extra on the credit side we have written 50. So debit side में I have written 50. What is the total of credit side? 642 plus 762 plus 25 का total 1429. चलो बैलेंसिंग फिगर. पासबुक ओवरड्राफ्ट. पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंसिंग फिगर 116. यस हार्दिक परमार. नाउ अब देखो 1160 इज ऑलरेडी आंसर गिवन इन द क्वेश्चन.
करेक्ट। एडजस्टमेंट 7 क्या था? डिविडेंड रिसीवेबल 62 पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है। 62 का डिविडेंड था विच आई हैव रिसीव्ड सिमरन, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो दिस 62 डिविडेंड इज माय इनकम, दैट्स व्हाई आई हैव रिकॉर्डेड इन कैश बुक डेबिट, इनकम मेमोरी। करेक्ट ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबडी इज डन दिस? ये समझा के नहीं? ना। व्हेन निकी रिसीव्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया था। वेरी गुड, थैंक यू। व्हेन निकी रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ, इसमें खाली हम लोग डेबिट क्रेडिट मार्क कर लेते, ठीक है ना? 10,39 व्हेन निकी रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस, तो ये पासबुक फेवरेबल बैलेंस है, करेक्ट है ना? पासबुक फेवरेबल बैलेंस, तो वेयर इट विल कम? क्रेडिट डेबिट? क्रेडिट, तो बीआरएस डेबिट क्रेडिट, पासबुक में क्रेडिट 10,39,200, करेक्ट ना? A deposit of 3,09,200 paid had not been credited. अब तो बात ही करते, नॉट बीन क्रेडिटेड कहां पर? पासबुक, तो क्रेडिट कर दो। हाउ मच यू विल क्रेडिट? 3,09,200, करेक्ट। फिर क्या है? Company had entered into hire purchase agreement to pay by bank order a sum of rupees 3 lakh on 10th of each month, commencing on April. No entries has been made in the cash book. हर महीने, every month, हाँ वैभवी, every month I am supposed to pay 3 lakh rupees. Every month I am supposed to pay 3 lakh rupees EMI. For how many months? मेरा मंथ ईयर एंड हो रहा है 30th जून, और दिस इज कमेंसिंग ऑन 10th ऑफ ईच मंथ फ्रॉम अप्रैल। हाउ मेनी मंथ्स का ईएमआई? 3 मंथ्स का, अप्रैल मई और जून, 3 मंथ्स का ईएमआई। ये करेक्ट है ना? 10,39,200, हाँ। तो ईएमआई विल कम ऑन, ईएमआई विल कम ऑन क्रेडिट साइड 9 लाख, कैश बुक का पेमेंट है ये, करेक्ट? 9 लाख क्रेडिट साइड, कैश बुक का पेमेंट है ये। फिर a customer of the firm who received a cash discount of 4%, 4 lakh, 4 lakh paid to the firm on 12th of June. मतलब चार्टर्ड गलती क्या की इसने? बताओ बताओ, इसने गलती क्या की? इसने गलती क्या की? ये कैश बुक है चार्टर्ड, डिस्काउंट और बैंक कॉल। हमें मिला 4 लाख लेना था, 4% डिस्काउंट। 4 लाख लेना था, 4% डिस्काउंट। तो बैंक में 4% ऑफ 4 लाख कितना होता है? 16,000। 4% ऑफ 4 लाख, तो बैंक में आना चाहिए था 384, और डिस्काउंट में आना चाहिए था 16, करेक्ट है ना? बैंक में आना चाहिए था 3,84 और डिस्काउंट में 3 लाख, सॉरी, डिस्काउंट में 16। उस नालायक ने बैंक में पूरा का पूरा 4 लाख लिख दिया डेबिट साइड। That means, can I say debit side is overcast by 16,000? Debit side is overcast by 16,000, तो क्रेडिट में लिख दो 16, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, on 20th June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank, rupees 4 lakh.
बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। पैसे आए हैं, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। मनी कमिंग इन, कैश बुक नॉट रिकॉर्डेड, डेबिट साइड। करेक्ट। फिर बैंक चार्जेस हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस कैश बुक में किस साइड? क्रेडिट साइड। पेमेंट है ना, एक्सपेंस है, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड। डायरेक्टली डिपॉजिटेड 4 लाख रुपया इनकम, 1200 पेड इनटू बैंक, एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिट, डिपॉजिट दो बार लिख दिया कैश बुक में। डिपॉजिट कैश बुक डेबिट साइड में आता है, डिपॉजिट कैश बुक डेबिट साइड में आता है, डेबिट साइड में ट्वाइस हैव रिटेन। करेक्ट, तो क्रेडिट में एक बार 11,200, क्रेडिट में। करेक्ट। देर आफ्टर अ डेबिट ऑफ ₹1 लाख अपियर्ड, ये स्टेटमेंट ने एकदम सिंपल तरीके से उतार देता। अ डेबिट ऑफ ₹11 लाख अपियर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड में था, तो कैश बुक में किस साइड आना चाहिए? जल्दी जल्दी बताओ। कैश बुक में क्रेडिट साइड में आना चाहिए। करेक्ट, बात हो गई खत्म, इससे सिंपल कुछ था ही नहीं। करेक्ट। पासबुक में डेबिट साइड तो कैश बुक में क्रेडिट साइड। फटाफट टोटल बताओ क्रेडिट का। फटाफट टोटल। इसका टोटल निकालो, इसका टोटल निकालो, बैलेंसिंग फिगर यहां पर जो आंसर आ जाएगा। यस, नो। करेक्ट। नाउ बैलेंस इज 29,29,86,600। 29,86,600। इसका टोटल 4 lakhs, तो इसका टोटल है 33,86,600। नाउ 29,78, नहीं तीसरा, 29,78, सॉरी, सॉरी, 78, 33,70। करेक्ट। फुल अमाउंट विश्वा। नाउ shall we do depreciation or bills? Shall we do depreciation or bills? सेवेंथ, सेवेंथ में कुछ नहीं, डेबिट में बैंक स्टेटमेंट में डाल दिया था फॉर एन अनपेड चेक, डिसऑनर्ड चेक था ये। डिसऑनर्ड चेक था विच वाज पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ पासबुक, तो डिसऑनर्ड चेक कैश बुक का क्रेडिट साइड में आना चाहिए था, नहीं आया। डेप्रिसिएशन बोल रहा है, चलिए डेप्रिसिएशन का, तो मेजोरिटी ने डेप्रिसिएशन कहा। मिस्टर्स, एक मिनट, डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। सर बेस्ट कंसाइनमेंट, रुको अम्मा। ना, यस, डेप्रिसिएशन ही करते हैं।
Messrs Suba Pharmaceuticals has imported a machine on 1st July for 6 lakhs 40. ठीक है, 6 lakhs 40 का मशीन खरीदा. They also paid customs 80 and incurred erection charges 60. Oh my God. तो 6 lakhs 40 plus 80 plus 60. 640 plus 80 720. 720 plus 60 कितना हो गया? That is 7 lakh 80,000. Correct. Another local machine 1 lakh was purchased on 1st January 2018. ठीक है. This was on 1st July 17. तो 17 में एक मशीन, 18 में another machine, local machine. On 1st July 19, a portion of imported machinery, value 1/3. Imported machine मतलब first machine. First machine का 1/3. 1/3 of first machine is 2 lakh 60. 1/3 of first machine is 2 lakh 60. Correct? 2 lakh 60. So this will become 2/3. That is 5 lakh 20. Got out of order and was sold for 134,800. ठीक है. तो पहले मशीन 1 खरीदा, देन मशीन 2 खरीदा, फिर मशीन 1 का 1/3 इज सोल्ड. Another machine was purchased to replace, और एक मशीन खरीदा 50. Depreciation calculated at 20% per annum. Show machinery account for 27, 28, 19 using WTV method and provision for depreciation account was maintained. ठीक है. चलो. Now, correct. Statement of ईयर एंड इज 31st ऑफ डिसंबर. अगर बोलेगा 17-18 तो ईयर एंड इज 31st मार्च. अगर खाली 17 बोलेगा तो 31st डिसंबर. स्टेटमेंट ऑफ मशीन डेप्रिसिएशन 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. और reducing balance method and year end is 31st of December. Correct. Date, particulars, machine 1 1/3, machine 1 2/3, क्योंकि machine 1 का 1/3 is sold, 2/3 is left. Then machine 2, machine 3 total. Correct. Now, which date machine was purchased? Which date machine was purchased? 1/7/17. Which date machine was purchased? 1/7/17. How much it was purchased for? How much it was purchased for? It was purchased for 7 lakh 80. 7 lakh 80 में 1/3 was 2 lakh 60 and the second was
5,20,000, टोटल हो गया 7,80,000। करेक्ट। उसके बाद 31 दिसंबर को 2017 में कुछ नहीं, 31 दिसंबर 2017 डेप्रिसिएशन कितना, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, कितना आएगा, 26,52,000। करेक्ट। कितना हो गया, 78 चार्टर्ड। चलो 2017 खत्म, 2017 खत्म। तो मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंट, तो बैलेंस आ गया 1,118। बैलेंस कितना, 234। हाफ ईयर का ही लिया ना, 6 मंथ्स का दीर्घ, और 468, 20% है, तो हाफ ईयर का हुआ ना 468। करेक्ट है ना। हाँ। कितना हो गया, वैल्यू कितनी बची, हाउ मच वैल्यू इज लेफ्ट, 702। करेक्ट। हाँ। फिर 1,118 को वापस परचेस किया, 1,118 को परचेस किया। हर क्वेश्चन में मेंशन किया ही रहेगा, अगर खाली जैसे 2017 बोला है तो वो कैलेंडर ईयर है, अगर 2017-18 बोला है तो वो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है ना। तो शुभम हर सब में बोला ही रहेगा। देर आफ्टर 1,118 को नया मशीन परचेज किया, परचेज, हाउ मच परचेज, 1 लाख, 1 लाख का परचेज। यस आकांक्षा, मैंडेटरी है ये, इंस्टीट्यूट ने बहुत बार खाली ये स्टेटमेंट ही पूछा है। तो आपको स्टेटमेंट बनाना ही होगा ना। देर आफ्टर चार्टर 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018, again we'll charge depreciation on all the machine for full year, that is 46,800. Correct. 93,600, 20%, और इसका 20%, 20,000। करेक्ट। तो डिप्रिसिएशन हो गया 1,60,400। करेक्ट। देर आफ्टर ना, ये खत्म हो गया 2018। नाउ विल कम टू 2019, 1/1/2019। बैलेंस 187,200, 374,400, 80,000। टोटल कितना हो गया, टोटल इज 641,
करेक्ट। नाउ 1719 को हमने बेच दिया, फर्स्ट मशीन। तो ऑन दैट वील चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% फॉर 6 मंथ्स। तो 18,720 का डेप्शन, 18,720 का डेप्शन। हाँ, वैल्यू WDV written down value is 168 480. Very good, Vignesh. Thereafter selling price 134 800, 134 800, करेक्ट है ना? हाँ जी। Therefore chartered लॉस, लॉस हो गया 33,680 का, करेक्ट। बट चार्टर्ड जो एसेट बेची, ध्यान से देखिएगा, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? द एसेट विच आई हैव सोल्ड, उस पर 26,000, 46,800, 18,720। टोटल डेप्शन ऑन एसेट सोल्ड इज 91,520। ये याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब क्या, 1719 को ही वी परचेज अनदर मशीन टू रिप्लेस द इंपोर्टेड वन 50,000 का। ये सेलिंग प्राइस 134,800, लॉस 33,600, 680, करेक्ट। नाउ 31st December 2019, डेप्रिसिएशन, सबका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, फुल ईयर का। रिमेनिंग वाला 74,880, ये रिमेनिंग वाला पर चार्ज किया ना, इस पर 16,000। बट चार्टेड इस पर सिर्फ 6 मंथ्स का लगेगा, 5,000। टोटल डेप्रिसिएशन इज 95,880। 50 का खरीदा, 95, सो टोटल हो गया सत्तर ना, 299,520, then 64,000, then 45,000 and 408,520, करेक्ट। नाउ चार्टेड, एक बात देखते हैं, द एसेट विच इज सोल्ड, जर्नल एंट्री फॉर सोल्ड, कैश बैंक कितना, 134,800, करेक्ट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट कितना, 91,520, टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, करेक्ट। लॉस 33,680 टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी, करेक्ट। टू प्लांट एंड मशीनरी इज 2,60,000, करेक्ट। नाउ करेक्ट, नहीं है नील,
करेक्ट ना। और अब क्या रिकॉर्डिंग बेटा, कल तो एग्जाम। नाउ विल प्रिपेयर टू अकाउंट्स। एक है प्लांट एंड मशीनरी और एक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। करेक्ट। अब अकाउंट बना लोगे इसका? यस नो? क्या अकाउंट बना ले? बना लोगे? अच्छा, सब लोग बोले बना लेंगे सर, क्या बात। ना, अब वी विल मूव टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। करेक्ट। नहीं सर, अकाउंट बना दो। कौन सा पीडीएफ? अकाउंट बनाते हैं नहीं। 1117। 1117 टू कैश बैंक। कितना? 7,80,000। करेक्ट। नाउ चार्टेड डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो 31 दिसंबर, नहीं साक्षी, 31 दिसंबर 2017 बाय डेप्शन कितना? 78,000। एक मिनट, एक मिनट, हाँ 1 मिनट में। ना, सो 31 दिसंबर 2017 टू कैरेट 78। करेक्ट। 31 दिसंबर 2017 कैरेट डाउन 7,80,000। ना, 1118 टू ब्रॉड डाउन 7,80,000। 1118 बाय ब्रॉड डाउन 78। फिर नेक्स्ट ईयर परचेजेस। नहीं, ओनली इफ दे आस्क, इट इज नॉट मैंडेटरी। 1 लाख। 1118 को भी परचेज। करेक्ट। 1118 को भी परचेज। 1 लाख। फिर 31 दिसंबर को वापस डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन टू पीएफडी। तो पीएफडी में 31 दिसंबर 2018 बाय डेप्शन। करेक्ट। बाय डेप्रिसिएशन कितना? 1,60,400। 1,60,400। अब 31 दिसंबर 2018 carried down 8,80,000। 1,119 brought down 8,80,000। करेक्ट।
to carry it down. Vaibhavi. Now, up 31st December 18 to carry it down. 78 plus 160, that is how much? 78 plus 160, 400. How much it is? 238, 400. Correct? 1119 by brought down. Correct? Now charted 17 को बेच दिया तो प्लांट एंड मशीनरी में 17 तक का डेप्रिसिएशन 1719 बाय डेप्शन. डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज डेप्रिसिएशन टू पीएफडी, तो पीएफडी में बाय डेप्रिसिएशन. हाउ मच इज डेप्रिसिएशन? 18720. करेक्ट. नाउ 17 को वी सोल्ड इट, तो जर्नल एंट्री फॉर सेल इज व्हाट? कैश बैंक पीएफडी लॉस टू पीएम. तो पीएम में 1719 by cash bank 134,800 by provision for depreciation 91,520 by loss 33,680. अब chartered PM में we have written by PFD. PM में we have written by PFD. Now, 1 second, let me check whether YouTube is working on. चलिए, so PM में we are writing. Is YouTube में working? It is. If PM में we are writing by 91,520, then PM में by PFD, तो PFD में 1790 2 PM. How much? 91,520. Correct? Incorrect? Correct. Thereafter chartered.
द लेफ्ट फिर और एक मशीन खरीदा 1719 को. वी परचेज्ड वन मोर मशीन टू बैंक. हाउ मच वी परचेज्ड? Machine disposal account, if they say, then only we'll prepare. Otherwise, will not. Not mandatory. Correct? To bank, how much? 50,000. Correct? Or 31st December 2019. By balance carried down. वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कुनाल. कैरिड डाउन कितना आ गया? और यहाँ पर 31st December 19 को बाय डेप्रीसिएशन. बाय डेप्रीसिएशन हाउ मच? 95,880. Correct? Yes, no. और 31st December 19 को टू बैलेंस कैरिड. Tell me फटाफट what is the balance of asset and what is the balance of PFD. Please remember to post this entry. PM में by PFD तो PFD में 2 PM. Correct? Yes, no. 6,70,000 and 3,53,000. 3,53,000 कैसे आएगा निश्चित में? ये 95,880 है ना. हाँ, 258,480. 258,480. Correct? Now, now charted. तो ये we are done with depreciation. Am I clear? Yes, no. Yes, sir. Shall we move ahead? Yes or no? Now, we will do now what? Depreciation. Depreciation के बाद क्या करेंगे? Bills of exchange. Correct charted? Bills of exchange. बहुत इंपॉर्टेंट है. Bills of exchange आएगा ही. Every year it comes. Bills of exchange. Consignment chances this time is very less because it comes alternative attempts. Last year it had come. Correct? Now, give me 2 minutes. There's some technical issue. 2 minutes may I'll be back. Okay? 2 minutes may we will start. The bills of exchange.
Started. We will start with depreciation. Right. Bills of exchange. Now, bills of exchange, may I give you one table chart. See that very nicely. Correct. Bills of exchange may I will give one table. See that very nicely. This is for non-accommodation questions. First step will be sales and purchase. First step will be sales and purchase. Second step will be drawings and acceptance of a bill. Drawings and acceptance of a bill. ठीक है ना? Third step होगा options. What to do with the bill. Third step will be options. What to do with the bill. Like discount कराया, retain किया, bill sent for collection या discount $261,480 इंडोर्स. करेक्ट. पहले या तो रिटेन किया, डिस्काउंट कराया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन और इंडोर्स. नाउ फोर्थ इज बिल इज डिसऑनर्ड. करेक्ट. Fifth, I am writing the steps. Can you see the screen? I am writing the steps. Can you see the screen? Then 6 is noting charges. बहुत सारे पब्लिक ना ये दोनों को कंबाइन कर देते. यू कैन डू दैट ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो फर्स्ट इज सेल परचेज, फिर ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस, फिर ऑप्शंस, फिर डिसऑनर्ड, फिर नोटिंग चार्जेस. 6 कैश पेमेंट. 6 is cash payment. 7 interest on fresh bill. Interest on fresh bill. Correct. 8 is fresh bill. 9 वापस ऑप्शन फ्रेश बिल का. फ्रेश बिल का ऑप्शन. 10 ऑनर या डिसऑनर. ऑनर हो गया तो सम खत्म. डिसऑनर हो गया तो 11 वापस नोटिंग चार्जेस. और 12th insolvency. I'll repeat the steps. Sale or purchase, then drawing and acceptance, options of the bill, dishonor, noting charges. बहुत जन dishonor और noting charges club कर देते. You can do that. Then cash payment, interest on fresh bill, फिर fresh bill, फिर options वापस वही 4 options, फिर honor dishonor. Honor हो गया, then the sum is closed. Dishonor हो गया तो next 11 noting charges. 12 insolvency. Correct. Now, chat. Shall we move ahead? Now. पढ़ते हैं बिल. Question. Suresh invoiced goods worth rupees 20,000 to Mahesh with a trade discount of 5%. Trade discount charted is not shown in the books of accounts. Correct? तो 20,000 का बिल था जिसमें से 5% 5% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 1,000. तो लेफ्ट विथ हाउ मच?
19,000. Correct. Now, on the next day, the buyer paid 20% of the amount by check. इसका 20% 3,800 चेक से दे दिए. करेक्ट. एंड उस पर हमने 5% डिस्काउंट दे दिया. सॉरी, 2.5% का डिस्काउंट वी गिव. तो 2.5% का डिस्काउंट इज 95 रुपीज. 95 रुपीज का डिस्काउंट, तो 3705. रिमेनिंग 80%, 15,200 का बिल. करेक्ट. 20,000 minus 1,000 trade discount, which will not show in the books of accounts data. Correct. Thereafter, इस 19 में से 20% 3,800. उस 3,800 में 2.5% डिस्काउंट, मतलब 95 डिस्काउंट. 3,800 में 95 डिस्काउंट, मतलब चेक वैल्यू हैज बिकम हाउ मच? 3,705. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. इजी है. 3,800 का 2.5% 95 माइनस किया, 3,705 का चेक दे दिया सर. वेरी गुड. रिमेनिंग 19,000 का 80%, 15,200 का बिल हो गया. वेरी गुड. 1 month आफ्टर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है. सुरेश endorsed his bill to creditor Sudhir. A week before the due date of the bill, महेश रिक्वेस्टेड. डिसऑनर होने के पहले महेश रिक्वेस्टेड अ रिन्यूअल बिल. ठीक है. महेश पेड 10,000 in cash and accepted a new bill with interest at the rate of 10% for 3 months. Suresh paid, this is very important line, Suresh paid the amount in full by check to Sudhir. ठीक है. सुरेश ने सुधीर को पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया. ऑन मेच्योरिटी द रिन्यूड बिल रिटर्न्ड अनपेड. डिसऑनर हो गया. अनपेड मतलब डिसऑनर. एंड नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 44. नोटिंग चार्जेस कितना? 44. ना, रिन्यूड बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस. ओरिजिनल जो बिल डिसऑनर हुआ था उस पर नो नोटिंग चार्जेस. करेक्ट. A month later, Mukesh was declared insolvent because second bill was dishonored and his estate could pay first and final dividend of 60 paisa in a rupee. 60 paisa in 1 rupee, that means 60%. Past journals in the books of Suresh, Mahesh and Sudhir. Suresh, Mahesh and Sudhir. Chale. Now, bills of exchange. Bills of exchange. Transaction in the books of Suresh, in the books of Mahesh, in the books of Sudhir. Correct. The original question, when it came in the exam, no, they had asked for all the 3 books. ठीक है ना, तो हम लोग भी तीनों बुक सीख लेंगे. Now, transaction. First transaction is of sale and purchase. So Suresh sold goods to Mahesh. Suresh sold goods to Mahesh. When Suresh sold goods to Mahesh chartered, the journal entry will be Mahesh to sell. How much? 19,000. 19,000. Correct? Now, thereafter purchase हुआ. Purchase is 19,000 to Suresh. 19,000. So Suresh sold, Mahesh purchased. Simple.
Sudhir will pass, no entry. Entry number 2, drawing and acceptance. महेश को पहले तो चेक मिला, महेश रिसीव्ड अ चेक, हाउ मच का चेक? सर 3705 का चेक मिला, वेरी गुड, 3705 का चेक मिला, करेक्ट, यस और नो? यस. डिस्काउंट अलाउड हाउ मच? 95. बिल रिसीवेबल हाउ मच? सर 15,200. हु गेव द बिल? सर महेश, तो टू महेश. हाउ मच? 19,000, करेक्ट. महेश ने सुरेश को पेमेंट किया, महेश ने सुरेश को पेमेंट किया, करेक्ट. हाउ मच? सुरेश अकाउंट डेबिट 19,000. टू बैंक हाउ मच? बैंक 3705. टू डिस्काउंट रिसीव्ड 95. टू bills payable 15,200. Correct, chartered? Yes, no. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Now, thereafter, ये बिल ड्रॉ हो गया, सुरेश को पैसे मिल गए. अब सुरेश ने बिल का क्या किया? ऑप्शंस. सुरेश गेव द बिल टू सुधीर. सुरेश गेव द बिल टू सुधीर, तो सुधीर को बिल दे दिया, तो सुधीर टू बिल्स रिसीवेबल 15,200 का बिल ट्रांसफर कर दिया, 15,200 का बिल ट्रांसफर कर दिया. महेश क्या एंट्री पास करेगा? महेश को कोई मतलब ही नहीं है, तुम बिल को फाड़ दो, जला दो, गंगा में डाल दो. यू टेयर द बिल, यू पुट फायर ऑन द बिल, यू पुट द बिल इनटू गैंजेस. Mahesh is not interested because the bill is not with Mahesh. The bill is received by whom? Sudhir. Sudhir will pass the entry bills receivable 15,200 to Suresh. Correct? Now, thereafter the bill is honored. After the bill was endorsed. The bill is honored or dishonored? The bill is honored or dishonored? The bill is dishonored. If the bill is dishonored, bill किसके पास है? सुधीर. Sudhir will ask money from whom? Suresh. तो सुरेश से मनी रिसीवेबल हाउ मच? 15,200. और बिल रिसीवेबल कैंसल. सुधीर इज आस्किंग मनी फ्रॉम सुरेश. सुधीर सुरेश को बोल रहा पैसा दे. सुधीर सुरेश को बोल रहा है पैसा दे. नाउ सुरेश विल से, सुरेश विल आस्क मनी फ्रॉम होम? महेश. हाउ मच? 15,200. सुरेश विल आस्क मनी फ्रॉम होम? सुहेश. सुरेश विल आस्क मनी फ्रॉम महेश. और किसको देना है? सुधीर को. हाउ मच? 15,200. करेक्ट, इनकरेक्ट? Mahesh will pass the entry. Mahesh will pass the entry bills. Mahesh is supposed, Mahesh के लिए bills payable cancel. But Mahesh is supposed to pay to whom? Suresh. Suresh will ask money from Mahesh and pay to Sudhir. Suresh will ask money from Mahesh, pay to Sudhir. Mahesh के लिए bills payable cancel और payable to Suresh. Correct? So Suresh is supposed to receive money from Mahesh and Mahesh is supposed to pay money to Suresh. Correct? Now, इसके बाद नोटिंग चार्जेस. सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, नोटिंग चार्जेस तो नहीं है, नोटिंग चार्जेस तो नहीं है, तो हटा दो. फिर क्या? सर फिर कैश पेमेंट है. अच्छा, कैश पेमेंट. किसने किसको कैश दिया?
सर महेश ने सुरेश को 10,000 रुपए दिए। महेश ने सुरेश को 10,000 रुपए दिए, तो कैश टू महेश 10,000 रुपए आ गए। कितने में से? सर 15,200 में से 10,000 रुपीज इज रिकवर्ड। 15,200 में से 10,000 रुपीज इज रिकवर्ड। यहां पर क्या लिखे? सुरेश टू कैश 10,000 10,000। सुरेश टू कैश 10,000 10,000। करेक्ट है, हाँ। फिर फिर क्या हुआ पता है? सम में दिया हुआ है सुरेश ने सुधीर को पूरे पैसे दे दिए। कितने? 15,200। तो सुधीर टू कैश 15,200 15,200। करेक्ट। और सुरेश का एंट्री पास करेगा। सुधीर को पैसे मिले, कैश टू 15,200। सुधीर को पूरे पैसे मिल गए, सुधीर का किस्सा खत्म। एम आई क्लियर? कैश पेमेंट के बाद क्या स्टेप्स के हिसाब से? इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। अब बैंक कैश कुछ भी लिखो, चलेगा ना? ना, और चेक दिया हुआ। करेक्ट। फिर चार्टेड इंटरेस्ट 15,200 आई वॉज सपोज टू रिसीव फ्रॉम महेश। मैं कौन हूं? नोटिंग चार्जेस सेकंड बिल का, रिन्यूअल बिल का, ओल्ड बिल का नोटिंग चार्जेस नहीं है। सुरेश महेश से 15,200 मांगता था। सुरेश वॉज सपोज टू रिसीव फ्रॉम महेश 15,200, जिसमें से 10,000 मिल गए तो बचे कितने? जिसमें से 10,000 मिल गए तो बचे कितने? 5,200। इस पर इंटरेस्ट लगेगा कितना? 12%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। तो हो गया कितना? 156। तो इंटरेस्ट हो गया 156। दिस इंटरेस्ट चार्टेड इज इनकम फॉर सुरेश, रिसीवेबल फ्रॉम महेश। तो महेश टू इंटरेस्ट 156 156। It is receivable from Mahesh and interest is income. It is receivable from Mahesh and interest is income. Correct. And for this person, interest is expense to to Suresh 156. Yes sir, no sir. Yes sir. Now chartered. After interest, fresh bill. फ्रेश बिल कितने का हो? सर फ्रेश बिल होगा पुराना 5,200 लेना है, प्लस इंटरेस्ट का 156 लेना है। करेक्ट। 5,200 लेना है, फिर इंटरेस्ट का 156 लेना है। तो बिल रिसीवेबल 5,356 टू महेश। करेक्ट ना? और ये लिखेगा सुरेश टू बिल्स पेबल। करेक्ट ना? देर आफ्टर नंबर 9। इसके बाद इसके पास फ्रेश बिल आ गया, तो इसके पास कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। व्हाट ही डिड, कुछ नहीं बुलाया तो बिल रिटेन किया, और रिटेन की कोई एंट्री नहीं।
फिर ये बिल भी जाकर डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो मैं महेश से मांगूंगा कितना सर? 5356 टू बिल्स रिसीव। डिसऑनर 5356, और यहां पर बिल्स पेबल कैंसिल, और सुरेश को आई एम सपोज टू पे 5356। एम आई क्लियर? नाउ इसके बाद नोटिंग चार्जेस, महेश से मांगूंगा नोटिंग चार्जेस 44 जो मैंने बैंक को दे दिए। नोटिंग चार्जेस डिसऑनर होने पर बैंक को देने पड़ेंगे, करेक्ट। और ये लिखेगा नोटिंग चार्जेस एक्सपेंडिचर जो पे करना है सुरेश को। अब चार्टर्ड मुझे महेश से लेने हैं 5356 बिल के, एंड 44 16 मार्क्स का, सौरभ। 5356 प्लस 44 हो गया 5400। कितना हो गया? 5400। बात समझ में आ रही है? उस 5400 में मुझे मिला कितना? 5400 में कैश अकाउंट डेबिट वी रिसीव 60%, दैट इज 3240। we received 60%, that is 3240. Bad debt 40%, bad debt 40%, लॉस हो गया डेबिट 2160 टू महेश। हाउ मच? 5400, करेक्ट? यस, नो? यस सर। नाउ चैट, what entry? 2160। If no somebody does not give me money, then it is bad debt. अगर मुझे कोई पैसा नहीं देता है तो बैड डेट। मैं किसी को पैसा नहीं दूं तो डेफिशिएंसी। मुझे कोई पैसा नहीं देता है तो बैड डेट। मैं किसी को पैसा नहीं दूं तो डेफिशिएंसी। ठीक है ना? ये 12 स्टेप जो मैंने लिखा है था उसी के हिसाब से सारे सम मार देने के, करेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सम में, ये ध्यान से देखना होगा, करेक्ट। ना, नाउ चार्टर्ड, अब हमें देखना है अकोमोडेशन वाला सम, करेक्ट है ना? ना, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। अकोमोडेशन का अगर सम आता है तो यही आता है, और ये भी 15 मार्क्स का आता है ठाकुर। सर इस बार आएगा? पूरी पूरे चांसेस है, क्योंकि लास्ट टाइम अकोमोडेशन नहीं आया था, नॉर्मल बिल्स आया था, तो इस बार अकोमोडेशन आने का पूरे चांसेस, और अकोमोडेशन में यही सम आता है। लता ड्रॉज अ बिल फॉर ₹40,000 एंड पल्लवी एक्सेप्ट्स द सेम फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, both of them to the extent of 3/4 and 1/4 respectively. Lata discounts the bill for 39,100 and remits 1/4 of the proceeds to Pallavi. Before the due date, Pallavi draws another bill for ₹50,000. ठीक है? On Lata in order to provide funds to meet the first bill. मतलब पहला बिल के पैसे देने के पहले, हाँ दिखाता हूं कसम, पहले बिल के पैसे देने के पहले बिल डिसऑनर हो गया, तो पल्लवी ने दूसरा बिल ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
The second bill discount करा 49 and with the help of which the first bill is met of for rupees how much 9,200. ठीक है. And a sum of rupees 9,200 is remitted to Lata. Before the due date of the second bill, Lata becomes insolvent and Pallavi received a dividend of 60 paisa in a rupee. करेक्ट. अब ध्यान से पूरा सम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट. चलिए ना, ये किसी को सोल्यूशन देखना था पुराने सम का. ये लो, ठीक है ना. चलिए ना, ट्रांजैक्शन. मैं जो वर्किंग नोट का सिस्टम दे रहा हूं ना, ध्यान से देख लो, क्योंकि आपको कोई भी सम इंस्टीट्यूट मटेरियल में एक सुंदर और राज वाला सम, उसमें भी हेल्प होगी. ये चार वर्किंग नोट एकदम स्टेप बाय स्टेप मार देना, एकदम सेट हो जाएगा. ट्रांजैक्शन. लता पल्लवी वर्किंग्स. करेक्ट ना. नंबर वन, फर्स्ट बिल Lata draws. So Lata will pass the entry bills receivable. Please follow the system which I am giving you, and it will work in all accommodation where two bills are there. Believe me, it will work in all accommodation where two bills are there. And two bills wala hi accommodation comes in exam. So follow the system very carefully. Bills receivable to Pallavi. How much? 40,000. 40,000. Lata, two bills payable. 40, 40. Correct. Number two, first bill discount. First bill discount. Correct. First bill discount. Journal entry. Bank account debit, how much? 39,800. Correct. Discounting charges 200. Correct. Two bills receivable 40,000. Correct. Pallavi, two discounting charges, two
नाउ डिस्काउंटिंग चार्जेस, 1/4 9950। अब इस सब में ना रेशियो 1/4 रेमिट किया, दैट इज गिवन, 1/4 रेमिटेड, दैट इज गिवन। बट चार्टर्ड, अगर रेशियो नहीं दिया होता तो हम लोग वर्किंग नोट वन करते। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस, ऐसा सम है ऑफ पी पल्लवी फॉर फर्स्ट बिल। ये इस सम में इस वर्किंग नोट का पता नहीं चलेगा, बट दूसरे सम में जब रेशियो फर्स्ट बिल का नहीं दिया होता है तो दिस रेशियो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ना, प्रोसीड। डिस्काउंट, अगर मेरे पास 39,800 आया तो डिस्काउंट 200। 39,800 इफ आई गॉट, देन द डिस्काउंट इज 200। अगर मैंने 9950 रेमिट किया है, 9950 रेमिट किया है, तो डिस्काउंट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिससे आ जाएगा ₹50। अगर रेशियो नहीं दिया होगा तो यू आर सपोज टू कैलकुलेट डिस्काउंट दिस। शुभम और राजेंद्र वाला सम है एक इंस्टीट्यूट मटेरियल में, वे रेशियो इज नॉट गिवन, so you're supposed to use this logic. Pallavi will pass the entry bank account debit 9950, discounting charges 50, to Lata 10,000। That means बैंक ड्यू डेट पर पल्लवी के पास जाएगी, बैंक ड्यू डेट पर विल गो टू पल्लवी आस्किंग 40। पल्लवी के पास ऑलरेडी 10,000 है, तो पल्लवी विल आस्क फ्रॉम लता हाउ मच? 30। ये प्लीज याद रखेगा, लता इज सपोज टू पे पल्लवी 30,000 ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट बिल, और यू कैन से पल्लवी इज सपोज टू रिसीव फ्रॉम लता ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट बिल 30। एम आई क्लियर? ये पहला बिल का ड्रामा खत्म। पहला बिल का ड्रामा के बाद आपको ये याद रखना है, पल्लवी इज टू रिसीव 30,000 फ्रॉम लता, ये याद रखना है, ठीक है ना? फिर सेकंड बिल स्टार्ट हुआ, नंबर 4। सेकंड बिल, पी अकाउंट डेबिट 50,000 टू बिल्स पेबल 50,000, पी अकाउंट डेबिट 50,000 टू बिल्स पेबल 50,000। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल 50,000, लता 50,000 फर्स्ट सेकंड बिल। फिर चार्टर्ड सेकंड बिल डिस्काउंट, सेकंड बिल डिस्काउंट। नाउ सेकंड बिल डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 49,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000, टू बिल्स रिसीवेबल 50,000। करेक्ट, टू बिल्स रिसीवेबल 50,000। नाउ अब नाउ चार्टर्ड नंबर 6। नाउ क्वेश्चन बोलता है पल्लवी लता को पैसे देती है, लता अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू टू होम, लता अकाउंट डेबिट
टू डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बैंक, लता को पैसे देती है और करेक्ट, लता को पैसे मिलते हैं। एक काम करते हैं, सेकेंड बिल डिस्काउंट कराए, सेकेंड बिल डिस्काउंट कराने के बाद अब इसके पास कितने रुपए आ गए, 49,000। तो फर्स्ट बिल ऑनर कर देंगे, फर्स्ट बिल ऑनर, फर्स्ट बिल हु विल ऑनर, फर्स्ट बिल हु विल ऑनर, जिसके पास बिल्स पेबल था तो बिल्स पेबल टू बैंक, पहला बिल ऑनर हो गया। पहला बिल कितने का था, 40,000। एकदम कोई सीक्वेंस चेंज नहीं होगी। नंबर 7, नंबर 7, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेमेट सेकेंड बिल, रेमिट सेकेंड बिल चार्टर्ड, सेकेंड बिल का अमाउंट रेमिट करना है। अब तो एंट्री विल बी व्हाट, इसको पैसे मिले कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 9,200, डिस्काउंटिंग चार्जेस पता नहीं है टू, टू पल्लवी, ये लिखेगी लता, टू डिस्काउंटिंग चार्जेस पता नहीं है टू लता। और इसके बाद आ जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 एंड 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 वर्किंग नोट हमें यहां पर करना है एंट्री नंबर 6 के बाद, क्योंकि ये हमारा जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है ना, ये वर्किंग नोट 3 से आएगा। करेक्ट। अब देखिएगा, 1000 फर्स्ट लेना है क्योंकि फर्स्ट बिल 40,000 का था, जिसमें पल्लवी का शेयर 10,000 था, वो लता से 30,000 मांगती। फर्स्ट बिल 40 का था जिसमें पल्लवी का शेयर 10,000, वो लता से 30 मांगती, लता ने नहीं दिए, बट द बिल वॉज ऑनर्ड। तो पल्लवी को लता से फर्स्ट बिल के कितने लेने हैं सर, 30। कैलकुलेशन ऑफ एल्स शेयर ऑफ सेकेंड बिल ना, रिसीएबल, calculations of L's share of second receivable from Lata for first bill। पल्लवी बोल रही है कितने लेने हैं, 30,000। अब ध्यान से देखते हैं, फर्स्ट बिल के 30 लेने हैं, सेकेंड बिल के पेबल कितने हैं, पेबल टू लता फॉर सेकेंड बिल, पेबल टू लता फॉर सेकेंड बिल पता नहीं है, बट सेकेंड बिल के जितने भी देने थे नेट पेमेंट उसने 9,200 का किया, दैट इज गिवन। करेक्ट, 9,200 का नेट पेमेंट दिया हुआ है। अब बताओ मुझे सेकेंड बिल का कितना देना था, फर्स्ट बिल का 30 लेना है, सेकेंड बिल का कुछ देना है। करेक्ट, सेकेंड बिल का कुछ देना है, और उसके बाद नेट पेमेंट 9,200 का किया, सेकेंड बिल का कुछ देना है और नेट पेमेंट 9,200 का किया। बताओ चार्टर्ड, सेकेंड बिल का कितना देना है। नहीं, सेकेंड बिल में रेशियो चेंज हो गया, सेकेंड बिल में रेशियो चेंज हो गया बेटा। आपने कैसे निकाला, ये आएगा 39,200, 39,200, 30,000 लेना था, देखो वापस 30,000 फर्स्ट बिल का लेना है। करेक्ट, सेकेंड बिल का कुछ देना है, वो दिया नहीं है। करेक्ट, मगर सेकेंड बिल के बाद नेट 9,200 का पेमेंट कर रहा है।
तो बताओ चार्टर्ड, सेकंड बिल का कितना देना था? फर्स्ट बिल का 30 लेना है, सेकंड बिल का कुछ देना है। नेट पेमेंट, नेट पेमेंट इज 9200। बता दो फटाफट सेकंड बिल का कितना देना था? 39,200। करेक्ट, ये बैलेंसिंग फिगर आया हमारा। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। किसी ने लिखा कि सेकंड बिल का रेशियो 4:1 है। बेटा वो 4:1 रेशियो आया कहां से? अब वर्किंग नोट नंबर 3। विश्वा कैसे कंप्यूट किया? विश्वा फर्स्ट बिल का 30,000। पल्लवी इज सपोज टू रिपीट, से यस और नो। फर्स्ट बिल का 30,000 आई एम सपोज टू रिसीव। सेकेंड बिल का आई एम सपोज टू पे समथिंग विच आई डोंट नो। करेक्ट, and then I paid net 9,200. So 30,000 minus something will give me negative 9,200 payment. So I was supposed to pay him 39,200. Now, calculation of, correct, calculation of L's share of discount of second bill. L's share of discount of second bill. Proceeds discount. अगर प्रोसीड 49,000 है तो डिस्काउंट इज 1,000। प्रोसीड 39,200 है तो डिस्काउंट इज हाउ मच? 800। आप चाहो तो आप यहां से कह सकते हो फ्रॉम ईयर कि आउट ऑफ 49,000 ही इज गिविंग हाउ मच? 39,200। ही इज नॉट गिविंग हाउ मच? 9,800। और रेशियो हो गया 1:4। सो अगर 49 फुल दे देता तो डिस्काउंट 1,000। गिविंग सेकेंड बिल का ओनली शेयर इज हाउ मच? 39,200। तो डिस्काउंट हाउ मच? करेक्ट। तो 1,000, 49,000 में हाउ मच ही इज सपोज टू पे फॉर सेकेंड बिल? 39,800। दैट इज नथिंग बट, सॉरी, 39,200। दैट इज नथिंग बट 80%। करेक्ट। Now you understood everybody this 800 discount. 49,000 में 1,000 discount, तो 39,200 में how much is the discount? So discount is 800. Discount is 800 and this is 10,000. So discount 800, cash bank 9,200 and this will become 10,000. Correct? Now, अब लॉजिकली सोचो, सेकेंड बिल कितने का है? 50। सेकेंड बिल 50, जिसमें से लता का शेयर कितना था पता है? 39,200। लता का शेयर सेकेंड बिल का कितना है? एल्स शेयर ऑफ सेकेंड बिल, लता का शेयर ऑफ सेकेंड बिल कितना है? 39,200 प्लस 800, दैट इज 40,000। लता का शेयर है सेकेंड बिल का। लता का शेयर फॉर सेकेंड बिल इज हाउ मच? 40,000। Bank will go to Lata asking for full 50,000. Lata dishonors the bill. Lata dishonors the bill. Am I clear?
Lata dishonors the bill. So she will write bills payable to Pallavi. 50, 50. And Pallavi will say Lata se receivable and paid to bank. Correct? 9. तो पल्लवी सेकंड बिल का पूरा 50,000 बैंक को दे चुका। पल्लवी सेकंड बिल का बैंक को पूरा 50,000 दे चुका चार्टर्ड। करेक्ट? जिसमें से आउट ऑफ विच लता का शेयर कितना था? 40। पल्लवी ने पूरे 50 दे दिए बैंक को। पल्लवी गेव इंटायर 50 टू बैंक, आउट ऑफ विच लता का कितना शेयर था? 40। उसने पूरे बैंक को दे दिया। वो लता से 40 मांगेगी कि नहीं मांगेगी? मांगेंगी। लता ने दिए, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी। पल्लवी को देने थे 40, टू कैश बैंक 60%, टू डेफिशिएंसी 40%। 40,000 देने थे, नहीं दिए। लता से 40 मिलने थे। लता से 40 मिलने थे। बैंक 24 मिले। बैड डेट इज 16 टू लता 40। लास्ट बिल 50,000 का, जिसमें पल्लवी का शेयर वॉज ओनली 10, लता का शेयर वॉज 40। Pallavi paid entire 50 to bank. So Pallavi will ask from Lata 40. Lata gave only 60%. Am I clear? Please, it's a request to all of you. If you know this, very good. If you do not know this, then please follow this system. Take a photograph. Go through this as much as you can, because this is highly expected in exam. Correct? चले चार्टर्ड, shall we move ahead? हाँ सर। अब हम लोग करते हैं कंसाइनमेंट। करें? shall we do consignment now? 16 मार्क्स के लिए आया था ये। क्रिश सर, सिमिलर क्वेश्चन इज इन होमवर्क क्वेश्चन 3 बट नॉट डन इन दिस वे। सेम वे, ऐसे ही होगा वो। करेंसी दाबी ऐसे ही हो जाएगा। इसी सिस्टम का फॉलो करेगा जैसे मैंने लिखा है, आराम से हो जाएगा वो क्वेश्चन भी। आईओएस मतलब? चलिए, इशू ऑफ शेयर्स पहले कंसाइनमेंट करते हैं। ऐसे क्या होगा ना, फिर पार्टनरशिप स्टार्टिंग मतलब कोई बोलेगा इशू ऑफ शेयर। नहीं, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑन अप्रूवल नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है ना। ठीक है ना? चलिए ना, कंसाइनमेंट शुरू करेंगे। स्वस्तिक ऑयल मिल वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट, एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी। ठीक है ना? अभी कंसाइनमेंट, उसके बाद फाइनल अकाउंट, उसके बाद एनपीओ, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद कंपनी। चांसेस ऑफ ईपॉक मेथड, बहुत ज्यादा चांसेस है पुष्कर। एक सेकंड।
12 बजे ब्रेक। एक इन्वेंट्री का सम कराऊंगा वीर। हाँ, अभी नॉर्मल लॉस सब करवा देंगे। आई विल ट्राई त्रिशा, आई विल ट्राई टू डू दैट, because that question will not come because it came in last attempt. No, that is for sure. Now, चले। वो 4 मार्क्स के आता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप खाली जेकेएससी मटेरियल देख लो, हो जाएगा। कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है, जो क्लास में पढ़ाया गया उसी को पढ़ के चले जाओ, हो जाएगा। नथिंग हीरोगिरी। चलिए, इसमें नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों है, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन 4 से 6 मार्क्स। सॉल्यूशन। स्वस्तिक ऑयल मिल्स, सोमरस, बॉम्बे कंसेंट। पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद आई विल गिव यू हाउ टू गो अबाउट द पेपर, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है सब बता दूंगा। आप पहले आराम से ये कर लो मेरे साथ, मैं बता दूंगा सब कुछ एंड में। बॉम्बे कंसाइंड 10,000 kgs of coconut oil to Das of Calcutta on 1st of April 1990। 10,000 kgs of coconut oil, ठीक है। The cost of the oil was 2 per kg। The swastik oil were accidentally destroyed to consigner 415 full settlement on 10th of April. On 30th June, Das reported 7,500 kgs was sold at rupees 3. The expenses being on go down and 200, advertisement 1,000, and salesman salary 2,000. Das is entitled to a commission of 3% plus 1.5% del creditory. In full settlement of the claim, Das took the delivery of consignment on 10th of April. Now, can you hear me? On 30th June, Das reported, advertisement ye del creditor commission, a party who has bought 1,000 kgs was able to pay only 80%. So we'll assume that entire sales is credit sales. We'll assume that entire sales is credit sales. Voice is breaking. Okay. Now, is the voice clear? Now, is the voice clear? Thank you. Now, chalo. We'll assume that entire sales is on credit. Correct? Thank you. Now,
Das reported a normal loss of 120 due to leakage. Assuming that Das paid the amount divided, show the ledger accounts in the books of consignor and consignee. क्या होगा ना, इसमें मैं सारे वर्किंग नोट करूंगा. देर आर सो मेनी वर्किंग नोट्स विच यू वुड नॉट लाइक टू डू इट, बट कोई बात नहीं, आप वही वर्किंग नोट कीजिएगा विच यू फील कंफर्टेबल. बट मैं सारे वर्किंग नोट इसलिए करता हूं फॉर क्लैरिटी पर्पस, फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस. यू कैन डू ओनली दोज विच यू फील कंफर्टेबल. क्वेश्चन वन ऑन कंसाइनमेंट. करेक्ट. ना, आराम से देखें. नंबर वन, goods sent on consignment. How many units were sent? Sir, 10,000 units were sent at the rate of rupees 2. कितने हो गए? 20,000. करेक्ट. यस. फिर चार्टर्ड पूरी एक्सपेंसेस की डिटेल लिखते हैं. शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस. सो दास नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, रिकरिंग एक्सपेंस, टोटल. करेक्ट. पहला खर्चा क्या है? फ्रेट का. कितना? 5,000. गोडाउन रेंट. गोडाउन रेंट कितना? 200. रिकरिंग है. एडवर्टीजमेंट कितना? 1,000. रिकरिंग है. सैलरी 2,000. रिकरिंग है. ये वर्किंग नोट बनाने का ये एडवांटेज है. अदरवाइज आपको हर जगह सारे डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस लिखने होंगे 5 प्लेसेस पर. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन 5 प्लेसेस आई विल जस्ट डू द टोटल. ये दोनों का रिकरिंग और नॉन रिकरिंग मिलाकर 3,200. फिर तो ये वर्किंग नोट बहुत हेल्प करता है. अदरवाइज यू कीप ऑन राइटिंग दिस डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इन ऑल द अकाउंट्स. इफ यू डोंट प्रिपेयर, नो प्रॉब्लम. नहीं आएंगे, मगर चांसेस कम है क्रिश. अगर आ गए तो छोड़ देंगे क्या? सेल्स 7,500 इंटू रुपीज 3. कितना हो गया? 22,500. अज्यूम क्रेडिट सेल्स. करेक्ट. फोर्थ, कमीशन. ऑर्डिनरी कमीशन कितना है? 3% ऑफ सेल्स ऑफ 2,22,500, मतलब 675. और डेलिकेटेड कमीशन इज 1.5% ऑफ 22,500, मतलब 338. तो टोटल कमीशन 1013. करेक्ट. टोटल कमीशन 1013. ना. नंबर 5, वैल्यूएशन स्टेटमेंट. वैल्यूएशन स्टेटमेंट. पर्टिकुलर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट. particulars, unit, amount. Now charted. Goods sent on consignment. कितना? 10,000 units. Amount is 20,000. फिर सोम्स एक्सपेंसेस कितना? 5,000. टोटल 10,000. इसका टोटल कॉस्ट हो गया 25,000. करेक्ट. इसमें है एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट. सर, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट कितना है? 250 बेटा. एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट इज हाउ मच? 250. अगर 10,000 का कॉस्ट 25,000 है तो 250 का कॉस्ट क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो. 625.
नाउ चार्टेड अगर एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस अगर दोनों ट्रांजिट में आ गए तो पहले आप एबनॉर्मल लॉस माइनस कर लो। 9750 normal and abnormal loss both in transit, then first subtract abnormal loss. How much? 24375. 24375। सैलवेज को क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। बोल तो दिया कि अगर एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दोनों ट्रांजिट में आए तो पहले एबनॉर्मल लॉस। करेक्ट। फिर ऐड कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो 9750 24375। इंस्टीट्यूट विघ्नेश उल्टा करता है, और अगर आप नॉर्मल लॉस पहले माइनस कर दिए तो आपका कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाएगा, तो प्लीज वैसा मत करिएगा ना। देन नॉर्मल लॉस इन गोडाउन, नॉर्मल लॉस इन गोडाउन 100, 100 की कोई वैल्यू नहीं। एम आई क्लियर? 100 की कोई वैल्यू नहीं। पुष्टि क्लियर? तो यू आर लेफ्ट विथ 9650 24375। करेक्ट। कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड, हाउ मेनी यूनिट्स आर सोल्ड? 7500। उसका कॉस्ट निकालो। 18944। क्लोजिंग स्टॉक ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकला, तो 2150 इज माई क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू 5431, जिसकी वैल्यू 5431। करेक्ट ना? अब ध्यान से, इन द बुक्स ऑफ सोम, इन द बुक्स ऑफ सोम एक बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकंड बनेगा दास का, थर्ड बनेगा एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस और फिर जीएससी अकाउंट। करेक्ट ना? अब ध्यान से देखिएगा, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सैल्वेज होगा तो क्या करें। ध्यान से देखिएगा। हाँ, विल डू नाउ दैट सैल्वेज वाला पार्ट भी। नाउ सबसे पहले
2 goods sent on consignment. How much? 20,000. To cash bank. Som's expenses. How much? 5,000. To Das expenses. How much? 3,200. अगर आपको वर्किंग नोट नहीं बनाते तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स 3,200 के देने पड़ते, यहाँ पे भी देने पड़ते, दास के अकाउंट में भी देने पड़ते। फिर दास का कमीशन 1013, करेक्ट। फिर बाय दास फॉर सेल, बाय दास फॉर सेल 22,500, करेक्ट। एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10,000 यूनिट्स का कॉस्ट इज 25,000, तो 250 यूनिट्स का कॉस्ट विल बी हाउ मच? 10,000 का कॉस्ट इज 25, तो 250 का कॉस्ट विल बी हाउ मच? 25,000 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 10,000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 625, करेक्ट। गॉट इट वैभवी शुक्ला? नाउ बाय एबनॉर्मल लॉस, अब ध्यान से देखना, 625 बाय क्लोजिंग स्टॉक 5431 बाय पीएल 657, बैलेंसिंग फिगर। दास के अकाउंट में किया गया, कंसाइनमेंट में टू दास, तो दास में बाय कंसाइनमेंट फॉर व्हाट? एक्सपेंसेस। अगर वो वर्किंग नोट नहीं होता तो वापस सारे एक्सपेंसेस यहां पे लिखने पड़ते, कमीशन, करेक्ट। नाउ कंसाइनमेंट में बाय दास, तो दास में टू कंसाइनमेंट, सेल 22,500, करेक्ट। और बाकी जो बचे दास से पैसे मिल गए बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर 18287। अब एबनॉर्मल कंसाइनमेंट में बाय एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस में टू कंसाइनमेंट 625, इसमें से बाय कैश, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दे दिया? 450, तो बाय पीएल कितना हो गया? 175। अगर सपोज इंश्योरेंस कंपनी ने 450 दिया, उसकी जगह बोला था ये सैल्वेज है, अगर सैल्वेज होता तो बाय कैश नहीं लिखता, हम लोग लिख देते बाय बैलेंस कैरिड डाउन फॉर सैल्वेज, बस इतना सा होता चेंज, और कुछ नहीं। खाली एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस शीट में आएगा वो 450 और 5431 दोनों ऐड करके आएगा। एम आई क्लियर? अंडरस्टूड? अगर सैलवेज होता तो यहाँ पे बाय कैश इंश्योरेंस की जगह बाय बैलेंस कैरिड डाउन, गेम खत्म, और कुछ नहीं आता, बस इतनी सी बात थी। जी हाँ, वही तो लिखा परमेश्वर कि अगर सैलवेज होता तो यहां पर बाय कैश इंश्योरेंस की जगह बाय बैलेंस कैरिड डाउन सैलवेज वैल्यू आ जाती। आई एम रिपीटिंग ओनली, अगर सैलवेज होता तो यहां पर बाय कैश नहीं आता, बाय बैलेंस कैरिड डाउन सैलवेज बोल के आ जाता, और बैलेंस शीट में टोटल क्लोजिंग स्टॉक दिस प्लस दिस आता। अंडरस्टूड शुभम? परमेश्वर?
छवि डन ना। अब जीएससी में बाय कंसाइनमेंट, ये कैश की जगह हम लोग लिख देते बाय बैलेंस कैरिड डाउन सैलवेज की वैल्यू। क्या सैलवेज का मतलब? वो स्टॉक विच इज सेव्ड। सैलवेज मतलब वो स्टॉक विच इज सेव्ड। करेक्ट। वर्कशॉप शो वर्किंग नोट ऑफ लॉस, वो तो दिखा दिया ना हम, ये रहा वर्किंग नोट ऑफ लॉस स्टेटमेंट। वीर ना बाय कंसाइनमेंट में हाउ मच? सर सैलवेज विल नॉट एड टू कंसाइनमेंट क्लोजिंग बैलेंस, दैट विल बी एडेड इन बैलेंस शीट कृष्णा। और क्योंकि यहाँ पे 625 में ये 450 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड ही है ना बाय कंसाइनमेंट। कितना? 20,000। और टू ट्रेडिंग 20,000। करेक्ट। चलो now we will go to consignees account in the books of। क्या होता है ना, मेजॉरिटी पब्लिक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते नहीं है। बैड डेट आएगा ना, अगर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लो ना तो सैलवेज यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज नहीं बनाओगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो लफड़े हो जाएंगे सैलवेज की वजह से ना। सोम अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, कमीशन। सोम अकाउंट में आएगा कि आई एम सपोज टू पे सोम बाय डेटर्स, क्रेडिट सेल के पैसे देने हैं। हाउ मच? 22,500। क्रेडिट सेल के पैसे देने हैं 22,500। करेक्ट। जिसमें से आई विल डिडक्ट एक्सपेंसेस के 3,200 और कमीशन के 1,013। आई चोज दिस सम बिकॉज इससे ज्यादा एंट्री पॉसिबल नहीं है। अगर एडवांस होता तो यहाँ पे बाय एडवांस आ जाता। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे भी एडवांस आ जाता, एक्स्ट्रा एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो ये सब में ऑल एंट्रीज आर कवर्ड। और जो बचा वो टू बैंक 18287। डेटर्स से लेकर सोम को पैसे देने हैं 22,500, जिसमें से बैड डेट हो गए 1,000 केजी पर ₹3 का सेल था, जिसमें 20% बैड डेट हो गए, 80% पैसे मिल गए, 20% बैड डेट हो गए। मतलब 600 बाकी, रेस्ट आई रिसीव 21,900। करेक्ट। Now, since del credere commission was given, bad debt will be borne by consignee. तो उसका कमीशन इनकम कितना हुआ? बाई सोम कमीशन 1,013, और उसको बैड डेट बेयर करना पड़ा 600 टू पीएल बैलेंस 413। ये रहा बैड डेट। करेक्ट। डेल क्रेडिट कमीशन दिया है। बात समझ में आ गई? यस और नो? नाउ चार्टर्ड we'll meet after break for final accounts. It may come
सब में आया है कुणाल? ठीक है ना? हाफ एन आवर का ब्रेक, खाना वाना खा लीजिए, फिर मिलते हैं। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। सोम का फुल फॉर्म स्वस्तिक ऑयल मिल।
Now, friends, let's start with final accounts. Plant and machinery. Ready, everybody? Shall we start? Now, plant and machinery, furniture, bank overdraft, capital, drawings, purchases, opening stock, wages, provision for doubtful debts. This is not a trial balance. This is balances of ledger accounts. Correct? Inventory will do at the end, Parmeshwar. Debtors, creditors, bad debts recovered, salary. So provision for doubtful debts is 3,200. Bad debts is correct. Salaries payable, that is outstanding salary, is directly it will go to P&L. Liability, prepaid rent, balance sheet asset. Items of trial balance, you have assumed that it will go once only. So chartered salaries payable will go only in balance sheet liability. Rent prepaid जो है खाली asset में जाएगा. Rent carriage inward trading में, carriage outward P&L में. Sales, advertisement expense, printing and stationery, cash in hand, cash at bank, office expense, interest paid on loan. Purchase includes sales return of 2575. Purchase includes sales return of 2575. तो purchase से we will subtract 2575 and sales return. Purchase includes sales return. तो purchase से will subtract, sales return में will add. If you add it to sales return ultimately तो sales से subtract होगा. तो ये भी sales से subtract directly कर दे हम लोग. करेक्ट. ये भी डायरेक्टली सेल से सब्ट्रैक्ट कर दे. हाँ जी. फिर चार्टेड सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न. सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न तो सेल से माइनस किया 1725 और ये परचेज रिटर्न में ऐड होगा. परचेज रिटर्न में ऐड होने का मतलब परचेज से लेस होगा. माइनस 1725. करेक्ट एंड करेक्ट. करेक्ट. This is given in final accounts. Vivo. This notes are given in Telegram. Correct. Thereafter, goods withdrawn by Z for own consumption included in purchases. So 3,500. And this is drawings. So drawings will be subtracted from capital. Drawings will be subtracted from capital. So capital से we'll subtract 3,500. Wages paid in the month of April for. तो वेजेस तो है नहीं, ये प्लांट एंड मशीनरी के लिए है, तो इट विल बी एडेड टू प्लांट एंड मशीनरी. करेक्ट. करेक्ट वैभवी. अब वॉइस क्लियर आ रहा है.
ठीक है ना? हम्म। देयर आफ्टर फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है एडवर्टीजमेंट टू पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट टू पब्लिसिटी, सॉरी एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस, तो परचेसेस से विल सब्ट्रैक्ट, परचेस से वी विल सब्ट्रैक्ट 825 और एडवर्टीजमेंट में विल ऐड 825, एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस, करेक्ट है ना? क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% and 2.5%, correct? Depreciation to be provided on plant and machinery at 15% and furniture 10%. Plant and machinery 19,550 plus 450, 20,000, 20,000 पर 15%, मतलब 3,000 depreciation का, करेक्ट? 3,000 depreciation का चार्टर्ड। हाँ या ना? ऋषभ अब ठीक है? और फर्नीचर का depreciation इज 10%, करेक्ट? तो फर्नीचर का 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगा -1025। यस और नो? यस सर। शैल वी मूव अहेड? यस सर। नाउ चार्टेड, ये बात ध्यान से देखिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमें स्टॉक के अगेंस्ट मिल रही है, तो अगर हमारा स्टॉक 100 रुपए का है, तो क्या आप बैंक ओडी मुझे 100 रुपए की दोगे या उससे कम की दोगे? हाँ, दे दूंगा 100, 100%। एग्जामिनेशन में हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, व्हाट यू ऑल आर सपोज टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द पेपर, वो सब टिप्स मैं लास्ट में दूंगा ना। चार्टर, अगर मेरे पास, मैंने स्टॉक को हाइपोथिकेट करके उड़ी लिया, अगर मेरे पास 100 रुपए का स्टॉक रहेगा तो बैंक उसको मुझे 100 रुपए का ओडी देगी, 100 रुपए से ज्यादा की ओडी देगी, 100 रुपए से कम की ओडी देगी, अगर मेरे पास 100 रुपए का स्टॉक रहा। If I've got a stock of 100 rupees, bank will give me OD of 100, more than 100, less than 100, less than 100। कितना लेस बोल रहा है? 20% लेस सपोज, तो बैंक के लिए रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ओनली 80। बैंक के लिए रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ओनली 80, ठीक है ना? जितनी भी रियल वैल्यू है उतना मैं मैक्सिमम ओडी ले सकता हूं। मतलब अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो बैंक रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक मानती है 80 रुपीज और मुझे मैक्सिमम ओडी 80 रुपीज का देगी। मुझे मैक्सिमम ओडी, नहीं पार्टनरशिप बाद में होगा, अभी चल रहा फाइनल अकाउंट, उसके बाद एनपीए, उसके बाद पार्टनरशिप। चलेगा शुभम? ना, जितना भी मैक्सिमम ओडी ले सकता हूं मैंने, एक्चुअल ओडी 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक ली है। 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक का मतलब 64 रुपीज की ओडी ली है, करेक्ट? अगर मेरे पास 100 रुपए का स्टॉक है तो बैंक उसको केवल, बैंक कंसिडर्स इट एट ओनली 80 रुपीज, करेक्ट? अगर 80 रुपीज के बैंक उसको स्टॉक समझता है तो 80 रुपीज का 80% मैंने ओडी 64 रुपीज दी, करेक्ट? इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, अगर मेरे पास ओडी 64 रुपीज की है तो मेरे पास स्टॉक होगा 100 रुपीज का। Is this clear? If I have an OD of 64 rupees, my stock will be 100। क्वेश्चन के हिसाब से एक्चुअल ओडी इज 80,000। क्वेश्चन के हिसाब से एक्चुअल ओडी इज हाउ मच? 80,000। तो स्टॉक कितना होगा चार्ट?
100 into 80,000 डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल टू, मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,25,000। एम आई क्लियर? यस, नो? यस सर। चले, अगर मेरे पास 100 रुपीज का स्टॉक है तो बैंक इज सेइंग आई विल कंसिडर दैट स्टॉक। वैसे 100 रुपीज का स्टॉक है तो बैंक विल नॉट कंसिडर 100 रुपीज, पुनः बैंक उसको उससे कम मानेगा। बैंक उसको कितना मान रहा है? 20% कम, मतलब 80 रुपीज का स्टॉक मान रहा है। जित अगर बैंक उसको 80 रुपीज का स्टॉक मान रहा है तो उसको रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक बोलते हैं। करेक्ट। अगर वो रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक है, शुभम वही कर रहा हूं, अगर वो रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक है 80 रुपीज, इसका मतलब मैं मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट 80 रुपीज का ले सकता। करेक्ट। हाँ जी। मैंने एक्चुअल ओडी 80% ऑफ 80 रुपीज ली है। 80% ऑफ 80 रुपीज मतलब 64 रुपीज की ओडी ली है। वापस बोल रहा हूं, 100 रुपए का स्टॉक है तो बैंक उसको 80 रुपीज का ही मांगती है। जितने का बैंक स्टॉक मानती है उसका 80% मैंने ओडी लिया है, तो 80% ऑफ 80 64 का मैंने ओडी लिया है। इसका मतलब अगर मैंने 64 का ओडी लिया है तो मेरे पास स्टॉक है 100 रुपए। अगर आज मेरे पास ओडी ट्रायल बैलेंस में 80,000 है तो मेरे पास स्टॉक कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आएगा 1,25,000। इज दिस क्लियर शुभम? कुणाल? करेक्ट। ना, एक सेकंड। ना, अब चार्टेड में वर्किंग नोट 1 करता हूं। स्केड्यूल ऑफ डेटर्स। डेटर्स कितने दिए हुए ट्रायल बैलेंस में? 1,20,000, 1,20,000 के डेटर्स है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने हैं? 5% ऑफ 1,20,000, मतलब 6,000 का न्यू प्रोविजन है। मेरे पास डेटर्स लेफ्ट कितने? 1,14,000 के डेटर्स है। फॉर डिस्काउंट अलाउड दिया 2.5%। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड 2.5%, दैट इज, तो मेरे डेटर्स बचे 1,11,250 जो कि मेरे बैलेंस शीट में है। ये प्रोविजन जो है ये नया प्रोविजन है तो पीएल डेबिट में आ जाए। ये प्रोविजन विल कम इन पीएनएल डेबिट। करेक्ट। फिर मैं बनाता हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओल्ड प्रोविजन 3,200। ओल्ड प्रोविजन 3,200। बैड डेट्स 1,100 का ट्रायल बैलेंस में दिया। ये टोटल बैड डेट है। कैरिड डाउन न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना है? 6,000 का। ये अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर विल ऑलवेज गो टू पीएनएल। किसी से भी साइड आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है, डेबिट साइड भी आ सकता है, किसी भी साइड आ सकता है। डेबिट साइड 1,11,150।
दिस अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट का बैलेंस किसी भी साइड आ सकता है। तो बाई पीएल आया क्रेडिट, तो पीडीडी में बाई पीएल, तो पीएनएल में टू पीडीडी। करेक्ट। ये ओल्ड प्रोविजन होगा ट्रायल बैलेंस वाला, ये टोटल बैड डेट होंगे, ये न्यू प्रोविजन होगा। बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कैन बी ऑन द डेबिट साइड, कैन बी ऑन द क्रेडिट साइड। करेक्ट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ये ट्रेडिंग नीचे पीएनएल। करेक्ट। एंड आई हैव बैलेंस शीट। नाउ चार्टर। फर्स्ट आइटम क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी चार्टर्ड। हाँ समझ, वैसे शुभम चलेगा ना? ना। 19550 वेजेस 450 ऐड किया। और ध्यान से देखो, हाउ एम आई सॉल्विंग। डेप्रिसिएशन 3000, outer column 70, and this depreciation will come in P&L. Depreciation on plant and machinery 3000. Depreciation on plant and machinery 3000. After plant and machinery, next item is furniture. So furniture is 10,250. $1025, outer column 9225. Correct. Or depreciation on furniture will come in. Depreciation on furniture will come in. वो तो पता नहीं उज्जवल। Is how much? 1025. Correct. After that is overdraft. Overdraft liability में लिख लिया 80,000. मगर चार्टेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ ओवरड्राफ्ट वी हैड कैलकुलेटेड क्लोजिंग स्टॉक। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरड्राफ्ट वी हैड कैलकुलेटेड क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिख लिया 1,25,000 और बैलेंस शीट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000। करेक्ट चार्टेड, यस और नो? Yes, sir. Now, after that, we have got capital. Capital 65,000. जिसमें गुड्स विड्रॉन 3,500 माइनस करना है। करेक्ट। फिर क्या है? ड्रॉ 8,000। करेक्ट। दो ड्राइंग्स हो गए।
देयर आफ्टर परचेजेस, तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ दी, फिर लिखा परचेजेस। परचेजेस कितना, फिर लेस सेल्स रिटर्न विच वाज रॉन्गली इंक्लूडेड 2575, फिर परचेज रिटर्न दैट वाज रॉन्गली इंक्लूडेड 1725, फिर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर वो हटा दिया, और एडवर्टीजमेंट 825 वो हटा दिया। देखो ये सब हमने ऑलरेडी लिख लिया था, -2575, -1725, -3500, -825, तो एक ही बार में सारे एडजस्टमेंट हो गए। और आउटर कॉलम में आ गया 1,51,375, 1,51,375, करेक्ट। चलेगा सौरभ ना। आफ्टर परचेजेस ओपनिंग स्टॉक 32,250, ट्रेडिंग डेबिट में लिख लिया, करेक्ट। फिर वेजेस, वेजेस कितना है, 12,165 -450, प्लांट एंड मशीनरी का 450 माइनस की। क्लोजिंग स्टॉक श्रेया वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड 11,171। वर्किंग नोट में वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ये हो गया वेजेस। ये रहा शेयर, वी हैड कैलकुलेटेड क्लोजिंग स्टॉक ओवर हियर, 100 रुपीज का स्टॉक, रियल वैल्यू 80, 80 का 80% एक्चुअल ओडी लिया था हमने। तो अगर 64 की ओडी है तो 100 रुपीज का स्टॉक, 80,000 की ओडी है तो कितने का स्टॉक। अश्विन अभी समझाया मैंने, 100 रुपए का स्टॉक है तो रियल वैल्यू गवर्नमेंट मतलब बैंक उसको मान रही है 80 रुपीज का स्टॉक। वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, उसका 80% इज द एक्चुअल ओडी वी हैव टेकन, दैट इज 64, 80% ऑफ 80, करेक्ट। If 64 is OD, stock is 100. If 80,000 is OD, how much will be the stock? That is 1,25,000. Okay, Ashwin. वेजेस हो गया, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए हमने वर्किंग नोट बनाया था। दैट वर्किंग नोट गिव अस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 3,900 एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड ऑफ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड ऑफ 2,850, करेक्ट। और डेटर्स, ये वर्किंग नोट नंबर 2 में था, ये वर्किंग नोट नंबर 1 में था। डेटर्स वर्किंग नोट नंबर 1 से वी हैड टेकन आउट हाउ मच, 1,11,150, 1,11,150 का डेटर्स। आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये पुराना प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन इज ऑलवेज ऑन द क्रेडिट साइड, ओल्ड प्रोविजन विल ऑलवेज कम ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि नया प्रोविजन वी आर क्रिएटिंग, ओल्ड प्रोविजन वी आर रिमूविंग। New provision we are creating, so profit will decrease. Old provision we are removing, so if we remove old provision, profit will increase. हाँ वैसे भी कर सकते हैं, 2,850 -137, करेक्ट। नाउ आफ्टर दैट वी हैव डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स 47,500, यस सर। सर कल का पेपर आसान होगा ना, यस, इट विल बी वेरी इजी। बैड डेट्स, बैड डेट्स तो हो गया, बैड डेट रिकवरी। सर बैड डेट रिकवरी को बैड डेट के साथ एडजस्ट कर देंगे ना,
सर बैड डेट रिकवरी को प्रोविजन के साथ एडजस्ट कर दे ना बाबा। बैड डेट रिकवरी को यू विल नॉट एडजस्ट विथ एनीथिंग, इट विल कम इन पीएलएन क्रेडिट, इनकम है, इट विल कम इन पीएनएल क्रेडिट। हाउ मच? 450। आपको कैसे पता इजी होगा? अरे हर वक्त इजी होता है, कभी टफ पेपर आता ही नहीं है। और अगर टफ की बात करें तो लास्ट टाइम का पेपर कहा जाता है टफ था, तो इस बार तो इजी होना ही है ना, प्लस लास्ट अटेम्प्ट है, इजी होगा। सैलरीज 22,550। करेक्ट है? हाँ जी। सर मुझे प्रोविजन, प्रोविजन का मैंने जैसे बताया ना, अकाउंट बना लो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में तो कुछ है ही नहीं। ओल्ड जो प्रोविजन है वो यहाँ पे डाल दो, न्यू प्रोविजन है यहाँ पे डाल दो, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ऐसा अकाउंट बनाओ। ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस वाला यहाँ पे आएगा, सारा का सारा बैड डेट यहाँ पे आएगा। न्यू प्रोविजन जो डेटर से लेस किया वो यहाँ पे आएगा, और इस अकाउंट का पीएनएल में ट्रांसफर करता है। हर सब में ये चलेगा, कोई बुद्धि नहीं लगानी है। ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन और बैड डेट, अगर कुछ भी मिसिंग है तो उसको जीरो ले लेना। अगर ओल्ड प्रोविजन मिसिंग है जीरो, न्यू प्रोविजन मिसिंग है जीरो, बैड डेट मिसिंग है जीरो, जो मिसिंग है उसको जीरो ले लेना, बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में। चलो सैलरी इसके बाद चलेगा शुरू ना। प्रीपेड नहीं, सैलरीज पेबल, सैलरीज पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2450, 2450। चले। प्रीपेड रेंट एसेट, प्रीपेड रेंट एसेट, प्रीपेड रेंट एसेट कितना? 300। यस सर, नो सर। उसका फुल फॉर्म बता दो राज। हाँ कर सकते, कोई भी फॉर्मूला आपने जो क्लास में सीखा वो यूज कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देर आफ्टर, हमने ऐसे पढ़ाया तो हम ऐसे पढ़ा देते हैं, आपने जैसे पढ़ा है आप वैसे कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आंसर सेम आना चाहिए। फिर रेंट 4,300, फिर कैरेज इनवर्ड 1125, फिर कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड 1350 पीएनएल में, फिर सेल्स -2575 -172, सेल्स 2,15,300 माइनस सेल्स रिटर्न 2575 minus purchase return which was wrongly included 1725, 1725, 2,11,000, 2,11,000 में 3,350 add 825, 3,350 add 825, 4,175, the goods distributed, correct? Thereafter printing and stationery, printing and stationery 1,250,
अगर लक्षित 100 रुपीज का स्टॉक था तो बैंक ने उसका वैल्यू 80 समझा, रियल वैल्यू। इस 80 का 80% दैट इज 64 मैंने ओडी समझा, लिया है, सब में बोला है। 100 रुपीज का स्टॉक है तो बैंक ने उसका रियल वैल्यू सिर्फ 80 समझा, उस 80 का 80% मैंने ओडी लिया, 64। अगर ये 80,000 ओडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो स्टॉक कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ऑफिस एक्सपेंसेस। कैश इन हैंड 1450, कैश एट बैंक 3125, ऑफिस एक्सपेंस 10160। फिर क्या है? फिर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन है, IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउ मच? 3000 एक्सपेंस। सर, ओ सर, एक बात बताओ, बोलो। सर इंटरेस्ट ऑन लोन है लेकिन लोन ही नहीं है, लोन रीपे कर दिया होगा। हम्म, अच्छा, चलो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट, इस देश का उज्जवल भविष्य। बताओ फटाफट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 139535। ये जीपी को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। करेक्ट। नेट प्रॉफिट 83,800। और ये हो गया 137। बैलेंस शीट हो गई टैली, वो तो टल्ली रे टल्ली रे टल्ली हो गया। 267, 250, 267, 250। करेक्ट। नहीं वैभवी, 139535 ही है, मैंने भी चेक किया। आप चेक कर लो, आपने ओपनिंग स्टॉक शायद नहीं लिया, देखो। करेक्ट। और एक सम हो जाए फाइनल अकाउंट का। ठीक है, मैं ट्रांसफर कर दूंगा रिद्धि। अभी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो तगड़ा वाला, ये तगड़ा वाला है, देखो। ये ना इंस्टीट्यूट मटेरियल का है, ICAI मटेरियल का सबसे टफ क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का यही है। कर ले। वर्किंग नोट दिखाओ। हाँ, वर्किंग नोट ये रहा। चलिए, करे शुभम राजपूत। Now, from the following particulars extracted from the books of Ganguly, prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st of March after making the necessary adjustments. हाँ सुमन, डेप्रिसिएशन होगी। चलो, Ganguly's capital account, stock, sales return, purchase return, carriage inward, rent, salary, debtors, creditors, loan from Dena Bank at 12%, 1 lakh,
इंटरेस्ट पेड 4,500 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडवर्टीजमेंट। इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश विद ट्रेडर्स बैंक, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5%, 1/4/2015, ठीक है ना? फर्नीचर 9,000, डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैश इन हैंड डिपॉजिट्स। अच्छा, ये डाउट आया है सर, ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आएंगे? ट्रेड एक्सपेंसेस बताओ कहाँ पे आएंगे? ट्रेड एक्सपेंसेस बताओ कहाँ पे आएंगे अगर होंगे तो? ट्रेड एक्सपेंसेस आएंगे पीएनएल में, हमारा आईसीएआई यही बोलता है। ट्रेड एक्सपेंसेस आएंगे पीएनएल, ठीक है ना? वेरी गुड। किसी का डाउट था तो मैं लिख दिया। डिपॉजिट हमने रखा है 10% ऑन 1/4/2015। Value of stock was 3,93,000. This includes goods returned by customers of the value 15,000 for which no entry has been passed. तो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास नहीं की है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, तो सेल्स रिटर्न सेल से माइनस कर देंगे और डेटर्स से भी माइनस करेंगे 15,000। तो सेल से माइनस कर दिया 15,000 और चार्टर्ड डेटर्स से भी माइनस कर दिया 15,000। करेक्ट। और डेटर्स से भी वी हैव सब्ट्रैक्टेड 15,000। फिर परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन 1 जनवरी, तो परचेज से माइनस, एंड फर्नीचर में ऐड कर देते। फर्नीचर में ऐड कर देते, ऐड 10,000। करेक्ट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। तो जो 9,000 का ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का था उस पर पूरा साल का डेप्रिसिएशन, प्लस जो फर्नीचर अभी परचेज किया 10,000 का, उस पर ओनली 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, दैट इज जनवरी फरवरी मार्च। करेक्ट। तो 9,000 पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, 10,000 पर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, हो गया टोटल 1150 माइनस 50। The loan account of Dena Banks in the books of Ganguly appears as follows. Loan account appears as follows. ओपनिंग बैलेंस 50,000 लोन का, फिर और फ्रेश लोन लिया है 31 मार्च को। करेक्ट। फ्रेश लोन वी हैव टेकन ऑन 31 मार्च, तो उस पे तो नो इंटरेस्ट, क्योंकि फ्रेश लोन अगर ईयर एंड पे वी हैव टेकन चार्टर्ड, इफ फ्रेश लोन इफ वी हैव टेकन ऑन ईयर एंड, तो ईयर एंड पर जो लोन लिया उस पर थोड़ी इंटरेस्ट लगेगा। बात समझ में आ रही है ना? ईयर एंड पर जो लोन लिया है उस पर थोड़ी ना इंटरेस्ट लगेगा, नहीं लगेगा, तो इस पर ही इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 50,000 एट द रेट ऑफ 12%, मतलब 6,000 इंटरेस्ट ऑन लोन है। करेक्ट। और एडजस्टमेंट नंबर 6 देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। पे करना था कितना? 6,
पे किया कितना 3, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 3। ओपनिंग बैलेंस पर पूरा साल का इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 6,000 एट द रेट ऑफ 12%। जो फ्रेश लोन लिया है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि वो ईयर एंड पे लिया है। तो टोटल इंटरेस्ट देना है मुझे 6,000, जिसमें से एडजस्टमेंट 6 बोल रहा है 3,000 दे दिया है, तो 3,000 आउटस्टैंडिंग है। तो 3,000 इंटरेस्ट लोन जो पेड है इसमें ऐड कर दिया 3,000 आउटस्टैंडिंग है। सर लेकिन इंटरेस्ट पेड तो 4,500 दिखा रहा है, टोटल इंटरेस्ट पेड 4,500, जिसमें देना बैंक को दिया है 3,000, बाकी 1,500 किसी और को दिया हो। रिमेनिंग 1,500 वी वुड हैव पेड टू समबडी एल्स। करेक्ट है ना, चलेगा ना। चलिए फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1,000 फ्रॉम डेटर्स, interest represents ₹1,000 from debtors and the balance on investment and deposit। ठीक है। इंटरेस्ट इधर देखो, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 25,000, इस पर 5% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 5% इंटू 25,000, 1,250 इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट कितना है 1,50,000, 1,50,000 पर 10%, 1,50,000 इंटू 10%। करेक्ट ना। तो टोटल 16,250, जिसमें से इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है सर, इंटरेस्ट रिसीव ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ 7,250, जिसमें से 1,000 तो डेटर्स वाला है, तो 6,250 मिला। सो रिमेनिंग 10,000 अक्रूड इंटरेस्ट है। 16,250 इज द टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, जिसमें से मुझे 6,250 मिल चुका है। ट्रायल बैलेंस में 7,250 दिया हुआ है, जिसमें से 1,000 डेटर्स वाला है, तो रिमेनिंग 6,250 ये दोनों का है। तो 16,250 में से 6,250 मिल गया, तो 10,000 आउटस्टैंडिंग है। करेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो सिर्फ बैलेंस शीट एसेट में जाएगा। वैभवी अभी वापस मैंने समझा, वापस सुनो। इन्वेस्टमेंट में 5% इंटरेस्ट 25,000 पर 1,250 मिलना चाहिए। डिपॉजिट पर 10% इंटरेस्ट 1,50,000 पर 15,000 मिलना चाहिए। यस और नो? सो टोटल इंटरेस्ट आई शुड रिसीव इज 16,250, out of which interest received as per trial balance is how much? ट्रायल बैलेंस में बोला है इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 7,250। इस 7,250 में, इस 7,250 में 1,000 इज इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो 7,250 में डेटर्स वाला इंटरेस्ट 1,000 है, तो रिमेनिंग इंटरेस्ट 6,250 है। तो रिसीवेबल 16,250, रिसीव्ड 6,250, तो अक्रूड इंटरेस्ट इज 10,000। करेक्ट। वैभवी शुक्ला, यस नो? तो अक्रूड इंटरेस्ट 10,000 हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट इज 10,000। करेक्ट। प्रोवाइड इंटरेस्ट पेएबल फॉर देना बैंक, रिसीवेबल डिपॉजिट हो गया। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नाउ।
Schedule for debtors. Debtors as per trial balance is how much? 6 पॉइंट कंसिडर कर लिया ना मैंने. Sundry debtors include 20,000 due from Robert and 10,000 due to him. क्या करेंगे? Less from debtors and creditors 10,000. लोअर जो फिगर होगा वो दोनों से माइनस कर दे. 20,000. कॉमन ड्यूज 10,000. करेक्ट. सो डेटर्स से भी 10,000 माइनस, क्रेडिटर्स से भी 10,000 माइनस. करेक्ट. सो डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस 1,20,000. लेस सेल्स रिटर्न जो रॉन्गली इंक्लूडेड था 15. फिर रॉबर्ट वाला 10,000. So left with 95,000. Provision for doubtful debts 5%. 4750. करेक्ट. ये हो गया 90,250. ये चला जाएगा बैलेंस शीट. दिस इज योर न्यू प्रोविजन. पीडीडी अकाउंट. ओल्ड प्रोविजन कुछ है क्या? नहीं. बैड डेट कुछ है क्या? नहीं. न्यू प्रोविजन. न्यू प्रोविजन 4750. तो पीएनएल में आ जाएगा 4750. ये वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा. करेक्ट. ना. डन. ट्रेडिंग एंड पीएनएल. नहीं वैभवी, 20 और 10 में विच एवर इज लोअर दैट यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ, बिकॉज कॉमन डेटर्स, कॉमन ड्यूज इज ओनली 10,000. नो. ट्रेडिंग पीएल. अंडरस्टूड वैभवी जी. अरे चार्टर, विल यू टेल मी वन थिंग? Shall we start? Now, first item. It's okay. First item is what? Capital. 5,40,000. अच्छा, tell me, are you all understanding? Feeling comfortable? Thereafter. Thank you. फिर ओपनिंग स्टॉक
234. यार ऐसे तो you all are intelligent only, but still just asked. डर लगता है ना. Now, opening stock. After opening stock, sales. $14.48. Sales return 15,000 जो माइनस किया था यहाँ पर. फिर वापस और एक सेल्स रिटर्न 43. The outer column it will become 13,90,000. Correct. After that, purchases. How much? 12,15,500. Less furniture 15. Less purchase return 29. कितना हो गया? 11,76,500. 11,76,500. फिर क्या है? फिर कैरेज इनवर्ड. Carriage inward 93. After that, rent 28,500. 11,76,500 नहीं है क्या सौरभ? करेक्ट है ना ये? 11,76,500 चेक. फिर सैलरीज 46,500. फिर फर्नीचर का 10,000. और रिटर्न्स का 29. करेक्ट खुश. करंट मिस्टेक था. 12,15,500 -10 -29. करेक्ट करेक्ट सौरभ. सॉरी. नाउ आफ्टर सैलरीज, डेटर्स का वी हैड डन वर्किंग नोट. 90,000, 250, and from there we had taken out PDDD, provision for doubtful debts also. How much? 4,750. After debtors, loan from creditors 74 और रॉबर्ट वाला 10. कॉमन डील्स तो 64. नहीं 11,76,500 ये खुश. 2,15,500 -10 -29. Thereafter, loan from Dena Bank 1 lakh. Correct. Thereafter, नहीं, first bad debt, then provision for doubtful debts, then provision for discount.
Correct. Thereafter, loan from Dena Bank, interest. Interest on loan 4,500. Outstanding 3,000. 7,500. Outstanding interest on loan 3,000. Somebody had told me that 1,500 out of this 4,500, 1,500 previous year का हो सकता है. नहीं हो सकता. Previous year का होता तो इस साल के P&L में नहीं आता बेटा. So somebody said out of this 4,500, 1,500 previous year का outstanding हो सकता है. नहीं हो सकता. Correct. नहीं तो वो इस साल के P&L में नहीं है. Bad debt, RDD, PFD. Correct. कड़ी वाला. तो इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग आ गया. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशन. एक मिनट सम कंप्लीट कर ले. सैमसंग 17,000. देन एडवर्टीजमेंट 56. करेक्ट. देन इंटरेस्ट रिसीव्ड. हाउ मच? 7,250. आउटस्टैंडिंग 10,000. 17,250. Outstanding interest is in asset over here because that interest is receivable. That interest is receivable. Correct. Now, thereafter, cash with Traders Bank. So, bank account 40,000. Correct. Then in discount received 14,950. Thereafter, investment 25,000. Investments 25,000. Asset. Correct. Thereafter, furniture. Furniture 9,000 was there. Purchase किया 10,000. Depreciation लगा 1,150 और आउटर कॉलम में आ गया 17,850. ये डेप्रिसिएशन चला गया P&L में 1,150. करेक्ट. फिर डिस्काउंट अलाउड 37,700. फिर जनरल एक्सपेंसेस. General expenses 19,600. Then audit fees 3,500. Then fire insurance, traveling, postage. Fire insurance 3,000. Traveling expense 11,650. Postage 4,350. Correct.
cash 1900. Thereafter, deposit 1,50,000. Thereafter, drawings 50. ड्रॉइंग्स कैपिटल से लेस होगा. फिर क्लोजिंग स्टॉक 393 और क्लोजिंग स्टॉक 393. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब निकालो ग्रॉस प्रॉफिट. 279,500. 279,500. करेक्ट. ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया. फिर नेट प्रॉफिट 70,500. एक सेकेंड. नेट प्रॉफिट को यहां पे ऐड कर देंगे. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बता रहा हूं, रुको. करेक्ट. और बैलेंस शीट टैली हो गई. ना, एक सेकेंड. क्लोजिंग स्टॉक कैसे है? दैट इज गिवन इन एडजस्टमेंट 1 मीत. फोर्थ एडजस्टमेंट वीवो. फोर्थ एडजस्टमेंट में बोला है ये लोन अकाउंट है. लोन का ओपनिंग बैलेंस 50,000, पूरा साल का इंटरेस्ट. 31 मार्च ईयर एंड में बाकी का लोन लिया तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं. तो 50,000 पर 12% इंटरेस्ट 6,000 होता है. एडजस्टमेंट 6 बोला कि 3,000 दे दिया है, तो अभी भी 3,000 देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग. करेक्ट. 728 है ना. लोन नहीं लिखा होगा आपने ना. एडजस्टमेंट 7, इंटरेस्ट रिसीवेबल. इन्वेस्टमेंट पर 5% इंटरेस्ट 25,000 अश्विन. 1250. 1,50,000 पर 10% इंटरेस्ट 15,000. तो टोटल इंटरेस्ट आई शुड रिसीव इज 16,250. out of which trial balance is 7,250 you have received. Out of that 7,250, 1,000 is from debtors. So remaining is for investment and deposit 6,250. So 16,250 में से 6,250 you have received, 10,000 is outstanding. Correct Ashwin? ना, इधर देखो ध्यान से मैं जो दिखा रहा हूं.
चार्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के नोट्स है ये। दिख रहा है? कैन यू सी ऑन द स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स? इसके आपको फोटो लेना होगा। इट इज प्रिपेयर्ड by all manufacturing organization. It is prepared with all the cost incurred to manufacture or produce goods. That is direct cost plus direct expenses. Manufacturing account is prepared to calculate cost of production. ठीक है ना? Steps to prepare manufacturing account. हाँ मीत एक मिनट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में स्टेप 1 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में अगर परचेसेस नहीं दिया हुआ है तो इफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट गिवन देन इट शुड बी कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग या तो सप्लायर्स अकाउंट या तो सप्लायर्स अकाउंट से बनाना। एम आई क्लियर? या तो हम लोग ये स्टेटमेंट बना सकते हैं रॉ मटेरियल का, तो या तो ये रॉ मटेरियल का अकाउंट बना सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग कैलकुलेट। एम आई क्लियर? मगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए सप्लायर्स अकाउंट बनाना और ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के नोट्स आ गए। करेक्ट है? हाँ भेज दूंगा सौरभ। तो एवरीबडी हैज टेकन नोट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और चार्टर्ड। अगर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों बना रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी ट्रेडिंग में नहीं आएगा, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग में। इफ यू आर प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग टुगेदर देन नो एक्सपेंसेस विल कम इन। सामने दिख रहा होगा ना आपको दर्शन? अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों बना रहे हो then you are not supposed to write any direct expenses in trading. Everything will come in manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा जो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा परचेज की जगह। सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग में ले लेना। डेप्रिसिएशन भी प्लांट एंड मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, चार आइटम। ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, केवल चार आइटम आएंगे। करेक्ट? नाउ किस आपको पीएल और बैलेंस शीट दे सकते हैं? करेक्ट? आगे बढ़े अब एनपीओ के साथ। यस सर, नो सर? हाँ ये जो पीडीएफ है ये मैं भेज दूंगा। वर्किंग तो मैंने क्वेश्चन में ही कर दी थी बेटा। सानिया। करेक्ट साध। डन। कड़ी वाला जी। चलिए। नाउ
Yes, you can show separately. एनपीओ, एनपीओ के बाद पार्टनरशिप करेंगे। तो पहले पार्टनरशिप कर ले। एनपीओ कर लेते चलो, पहले एनपीओ कर। The receipts and payment account of Trustwell prepared on 31st of March 2020 is as follows. एनपीओ कर रहा है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का मतलब, एनुअल इनकम का मतलब होता है चार्टर्ड इनकम एक्सपेंडिचर वाला फिगर। एनुअल इनकम का मतलब होता है इनकम एक्सपेंडिचर वाला फिगर, मतलब ये फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। एड लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, मतलब दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। एड लास्ट ईयर प्रीपेड, मतलब ये ओपनिंग प्री रिसीव्ड है, प्रिंटिंग एरर नहीं है बट ये प्री रिसीव्ड है, ठीक है ना। अदर फीस, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये स्पेशल पर्पस डोनेशन है तो बैलेंस शीट में जाएगा। स्पेशल पर्पस डोनेशन है तो बैलेंस शीट में जाएगा। अदर फीस इनकम है। बाय एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना है 2700, तो एक्सपेंसेस का कितना होगा 3600 माइनस करने पर। स्पोर्ट्स मटेरियल और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दो चीज होती है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रीशिएट होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चार्टर डेप्रीशिएट होता है, वेयर एज स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम होता है। टेबल टेनिस जो बोर्ड है, टेबल टेनिस जो टेबल है वो इक्विपमेंट है, मगर रैकेट है, बॉल है, वो मटेरियल है। तो जिस चीज से हम लोग खेलते हैं वो मटेरियल है, वो कंज्यूम होती है। कैरम बोर्ड की जो कॉइन्स होते हैं, गोटी, दैट इज मटेरियल, वो कंज्यूम होती है। मगर कैरम बोर्ड इक्विपमेंट है, वो डेप्रीशिएट होता है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम होगा, इक्विपमेंट डेप्रीशिएट होगा। ठीक है शुभम। फिर चार्टर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अयो रामा, रिसीप्ट एंड पेमेंट में लॉस आ गया। WDV 150 का लॉस बता रहा है 180, तो 270 में बेचा होगा, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी रिसीप्ट एंड पेमेंट 270 में बेचा, इनकम एक्सपेंडिचर में लॉस 180, टू फर्नीचर 450। करेक्ट। 450 में 180 का लॉस हो गया, इसका मतलब 270 में आई सोल्ड इट, इनकम एक्सपेंडिचर में 180 और फर्नीचर में 4, बैलेंस कैरिड। अब ये रिसीप्ट एंड पेमेंट तो गलत है क्योंकि इसमें लॉस आ गया जो नहीं आना चाहिए था। सब्सक्रिप्शन का पूरा ड्रामा नहीं हुआ है, सब्सक्रिप्शन के सारे एडजस्टमेंट नहीं किए हैं, तो दिस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रॉन्ग। तो अगर ये रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग है, इसको भूल जाते हैं। ट्रस्टवेल क्लब हेड बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस, फर्नीचर 5% इन्वेस्टमेंट 27,000, 5% मतलब 1350 इंटरेस्ट हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट। सर कैसे पता चला ये अक्रूड इंटरेस्ट है? अगर ये इंटरेस्ट मिल चुका होता तो हमारे रिसीप्ट साइड में आता ना। अगर ये इंटरेस्ट चार्टर्ड हमें मिल गया होता तो हमारे रिसीप्ट साइड में आता, तो रिसीप्ट साइड में तो नहीं है। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, स्पोर्ट्स मटेरियल। डू यू अग्री विद द अबव रिसीप्ट्स एंड पेमेंट? नो, तो गलत है पूरा का पूरा ना। एक मिनट,
Now, now chartered. चलिए, now let's solve this. Non-profit organization. First, subscription account. Then, number 2, sports material account. स्पोर्ट्स मटेरियल के बाद एडजस्टमेंट फर्नीचर का है, तो फर्नीचर अकाउंट जिसके जिसके ओपनिंग बैलेंस दिए हुए सबके अकाउंट बना देता हूं वर्किंग नोट के लिए। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ। ओपनिंग बैलेंस शीट क्योंकि ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ। आराम से देखेगा कैसे हो रहा है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट गलत है, तो विल प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और फिर चार्टर्ड बैलेंस शीट। करेक्ट। रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट तो बनानी थी। आप लोग 3 वर्किंग नोट बनाते, सब्सक्रिप्शन का, स्पोर्ट्स मटेरियल का, फर्नीचर का एडलेस करते। मैंने उसका अकाउंट बना दी क्योंकि डबल एंट्री में शांति रहती। करेक्ट। नाउ चार्टर्ड, आराम से देखते हैं। आई होप सबने ड्राइंग कर लिया होगा। फर्स्ट आइटम क्या, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहां पे जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 450। और ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश बैंक 450, रिसिप्ट एंड पेमेंट में 450, कैश बैंक में 450। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर सब्सक्रिप्शन का एनुअल इनकम। आईएनई में बाई सब्सक्रिप्शन आता है, तो सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा टू आईएनई 4590। आईएनई में बाई सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में टू आईएनई। करेक्ट। देयर आफ्टर आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एसेट है हमारी, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। अच्छा, ये आईएनई में भी मैंने लिख दिया सब्सक्रिप्शन 4590। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मेरी एसेट है कितना, 180। सब्सक्रिप्शन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एसेट है डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड। करेक्ट।
फिर क्या है? ओपनिंग प्री रिसीव्ड लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। हाँ उज्जवल, रफली कर सकते हैं। तो ओपनिंग प्री रिसीव लायबिलिटी है, और ओपनिंग बैलेंस शीट में प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन क्योंकि लायबिलिटी। हर चीज की डबल एंट्री हो रही है, देखो। कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, एवरी एंट्री विल हैव टू इम्पैक्ट्स। फिर क्या है? अदर फीस हमें मिली है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में अदर फीस 1800 जो इनकम में भी आएगी। करेक्ट। देर आफ्टर चार्टेड डोनेशन, डोनेशन भी हमें मिला है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में डोनेशन। और डोनेशन बैलेंस शीट में आ जाएगा ना, बिल्डिंग फंड 90,000, क्योंकि डोनेशन फॉर बिल्डिंग है ये। करेक्ट। फिर क्या है ठाकुर? फिर एक्सपेंसेस, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में बाय एक्सपेंसेस 3600, इनकम एक्सपेंडिचर में टू एक्सपेंसेस 3600। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट में बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, और स्पोर्ट्स मटेरियल में टू रिसीप्ट एंड पेमेंट 2700 का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा हमने। करेक्ट। फिर RNP INE टू फर्नीचर, तो फर्नीचर में बाय RNP 270, बाय INE 180। तो RNP में वापस डेबिट साइड में टू फर्नीचर, फर्नीचर में बाय RNP, RNP में टू फर्नीचर। करेक्ट। फर्नीचर में बाय INE, INE में टू फर्नीचर लॉस वाला। करेक्ट। फिर क्या है? चार्टर्ड खत्म हो गया। ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का 1800, तो ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का 1800, और ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर 1800। फिर इन्वेस्टमेंट 27,000, तो बैलेंस शीट में मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 27, एंड देर इज नो परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो क्लोजिंग बैलेंस में भी इन्वेस्टमेंट 27। ओपनिंग बैलेंस शीट में 27, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 27। इसके बाद चार्टर्ड, इस पर अक्रूड इंटरेस्ट, इनकम एक्सपेंडिचर में अक्रूड इंटरेस्ट 5% ऑन 27,000, that will come in balance sheet also। 1350। करेक्ट। देर आफ्टर स्पोर्ट्स मटेरियल
66,660, तो ओपनिंग बैलेंस स्पोर्ट्स मटेरियल का 6660 और इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स मटेरियल 6660। करेक्ट। फिर चार्टर्ड क्लोजिंग में है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एसेट है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड 270, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड 90, लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस यहां पर, क्लोजिंग बैलेंस यहां पर। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने पूछता है तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन 90 की भी लायबिलिटी है। फिर क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल 1800 का, कैरिड डाउन स्पोर्ट्स मटेरियल 1800 जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल 1800। करेक्ट। और कुछ बचा? नहीं। चलिए चार्टर्ड इनकम सब्सक्रिप्शन का बैलेंसिंग फिगर, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं, रिसीप्स एंड पेमेंट बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? सब्सक्रिप्शन में बाय आरएनपी, आरएनपी में टू सब्सक्रिप्शन, स्पोर्ट्स मटेरियल में कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड बैलेंसिंग फिगर 7560, ये किधर आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। करेक्ट। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्नीचर का, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर 1350। करेक्ट। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 36। यस वैभव, यू कैन फाइंड इट। क्या कैपिटल फंड नहीं, कैपिटल फंड के लिए तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना ही हो। 36। करेक्ट। रिसीप्स एंड पेमेंट से कैरिड डाउन 90,270, ये कैश एंड बैंक 90,270, इनकम एक्सपेंडिचर से डेफिशिएंसी 32,400। टैली हो गया। करेक्ट। नाउ आफ्टर
10 minutes we will start with partnership. ठीक है ना? After 10 minutes we'll start with partnership.
So we are here after break. Partnership will start. Yes, no. Capital adjustment will come in this sum. बढ़िया शुभम, खा लिए। जी सर। कहाँ से हैं आप शुभम? यूपी से। बढ़िया। बट मुंबई में रहते हैं। बढ़िया है। पेपर इजी होगा 1+। टेंशन नहीं। नाउ पार्टनरशिप। The following was the balance sheet of XYZ. सॉरी, एकदम टेंशन नहीं, पेपर इजी आएगा। XYZ in a company is a partnership firm with partners A, B, C sharing profit and losses in the ratio 3:2:5. The balance sheet of the firm as on 30th June was as under. Balance sheet: capital A, B, C, long-term loan, bank OD, trade payables, land, building, plant and machinery, investment, inventories, trade receivables. It was mutually agreed that B will retire from partnership and in his place D will be admitted as a partner with effect from 1st July. This is admission cum retirement. ये वाला सम नंदनी आने का चाहने के बहुत चांसेस है, क्योंकि एडमिशन कम रिटायरमेंट बहुत दिन से नहीं आया है। It was mutually agreed that B will retire. In his place, D will be admitted as a partner. For this purpose, the following adjustments are to be made. Goodwill of the firm is valued at 2 lakhs. Due to firm's location advantage, but will not appear in the books. Now, बहुत सारे सम में दिया रहता है goodwill should appear in the books. अगर वो लिखा हुआ भी होना तो गुडविल अपीयर मत कराइएगा, क्योंकि वो पुराना सन है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ना बोलता है गुडविल के लिए, तो गुडविल अगर सम में लिखा हुआ भी है, जैसे एमटीपी में एक सम आ गया था जिसमें लिखा हुआ था
गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, फिर भी वो अपीयर नहीं करेगी। करेक्ट। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी रिवैल्यूड एट 90% एंड 85%। बिल्डिंग कितनी है? 2 लाख, तो डेट 10% से डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज 20,000 से। करेक्ट। और प्लांट एंड मशीन डिक्रीज हो जाएगा 15% से, दैट इज 57,000 से। थ्योरी के बारे में बता दूंगा झील। देयर आफ्टर investments are taken over by retiring partner at 25,000। इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में है चार्टर्ड, इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में है 22,000 के, ले गया 25 में, तो 3,000 रिवैल्यूएशन में जाएगा। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट 22 के थे, ले गया 25 में, मतलब 3,000 रिवैल्यूएशन में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स आर कंसिडर्ड गुड ओनली अप टू 90%, बाकी 10% बैड डेट। तो बैड डेट कितना हो जाएगा? 13,900। देखो यहाँ पे दिया हुआ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का टोटल कैपिटल 3 लाख होना चाहिए, विच शुड बी इन द रेशियो 3:4:3। ये कैपिटल एडजस्टमेंट। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। करेक्ट। अब पूरा सम करेंगे, देखिए ध्यान से ना। नंबर 1 चार्टर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। A is to B is to C। A is to B is to C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:5। A is to C is to D का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:4:3। करेक्ट। नंबर 2, इस समय तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं है। अगर होता तो हम लोग स्टेप 2 में यहीं पे करते वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस समय तो दे दिया है गुडविल 2 लाख। अगर नहीं दिया होता तो बेटा यहीं पर हम लोग वैल्यू करते उसको। करेक्ट। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या बैलेंस शीट में गुडविल है? नहीं। अगर बैलेंस शीट में गुडविल होती तो पहले उसको राइट ऑफ कर, अगर बैलेंस शीट में गुडविल होती तो पहले उसको हम लोग राइट ऑफ कर। यहाँ पर कितने पार्टनर हैं? ABCD। गुडविल की वैल्यू कितनी है? गुडविल की वैल्यू इज 2 लाख। रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 3:2:5। तो ए का शेयर वॉज 60,000, बी का शेयर 40,000, सी का शेयर 1 लाख। करेक्ट। 3:2:5, 60,000, 40,000, 1 लाख।
फिर नया रेशियो है 3:4:3, तो ए का शेयर 60, बी रिटायर हो गया, सी का शेयर 80 और डी का शेयर 60। तो चार्टर्ड ए का ओल्ड शेयर भी 60 था, न्यू शेयर भी 60, नो प्रॉब्लम। बी का ओल्ड शेयर 40, न्यू शेयर कुछ नहीं, मतलब 40,000 बी ने सैक्रिफाइस किया, करेक्ट। सी का ओल्ड शेयर 1 लाख, न्यू शेयर 80, ओल्ड शेयर 1 लाख, न्यू शेयर 80, तो 20,000 सी ने सैक्रिफाइस किया। डी का ओल्ड शेयर 60, सॉरी ओल्ड शेयर 0, डी का ओल्ड शेयर 0, न्यू शेयर 60, तो 60,000 गेन किया, करेक्ट। तो जर्नल एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी हो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यही करना है। ओल्ड शेयर, न्यू शेयर, गेनिंग शेयर, तो जर्नल एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट इज डी। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, करेक्ट। देर आफ्टर फोर्थ, स्पेशल एडजस्टमेंट। स्पेशल एडजस्टमेंट में चार्टर्ड बी टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट। बी टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू होंगे, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, करेक्ट। और फिर बी टू इन्वेस्टमेंट, 25,000 बी इन्वेस्टमेंट ले गया, करेक्ट। पहले 3,000 से रिवैल्यू किए, फिर बी इन्वेस्टमेंट ले गया चार्टर, अंडरस्टूड ना? स्टेप 1 रेशियो, स्टेप 2 वैल्यूएशन, स्टेप 3 ट्रीटमेंट, स्टेप 4 स्पेशल एडजस्टमेंट, स्टेप 5 रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोला बिल्डिंग 10% से डिक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग 10% से डिक्रीज हो रहा है, टू बिल्डिंग 20,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 57,000, करेक्ट। प्लांट, फिर इन्वेस्टमेंट देखो 3,000 से इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। और फिर डेटर्स डिक्रीज हो रहा है 13,900, 10%। चलो बताओ फटाफट रिवैल्यूएशन लॉस। बाई लॉस 87,900, दिस लॉस ए
ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना। करेक्ट। 40, 43, 9। स्पेशल एडजस्टमेंट में नंबर 1, एसेट लायबिलिटी सोल्ड हो सकता है, एसेट लायबिलिटी टेकन ओवर, जेएलपी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और पीएल सस्पेंस। ये हो सकता है। करेक्ट ना। अब रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होगा? नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस। नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर 4, स्पेशल एडजस्टमेंट। नंबर 5, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। नंबर 6, कैपिटल एडजस्टमेंट। ये 6 आइटम होगी और इसी सीक्वेंस में: ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, स्पेशल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और कैपिटल एडजस्टमेंट। आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दिखाना होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी दिखाना होगा। स्पेशल एडजस्टमेंट नहीं दिखाओगे तो आप एंट्री पोस्टिंग में गड़बड़ी कर दोगे। खाली रेशियो का स्टेप आप चाहे तो मिस कर सकते हो। ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी। If asset is taken over by liability तो जर्नल एंट्री हो जाएगी लायबिलिटी टू एसेट। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने गुडविल। शुभम, वो जर्नल एंट्री में बाद में बताऊंगा कैसे पास करनी है, अगर सब में खाली जर्नल एंट्री पूछी हो तो। पार्टनरशिप 20 मार्क का। ओल्ड गुडविल होगा तो राइट ऑफ करना है, तो पार्टनर्स टू गुडविल। ओल्ड गुडविल होगा तो राइट ऑफ करना है पार्टनर्स टू गुडविल ना। करेक्ट ना। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है? हाँ कर दूंगा हर्ष। 1,04,000, 76,000, 1,40,000। करेक्ट। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस वो नहीं है।
फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री डी टू बी टू सी। तो डी में टू बी एंड सी, डी डेबिट हुआ, बाय डी बी एंड सी में 40,000, 20,000। करेक्ट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गई। फर्स्ट इज कैपिटल, सेकंड इज रिजर्व, थर्ड इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, फोर्थ इज स्पेशल एडजस्टमेंट। स्पेशल एडजस्टमेंट में बी टू इन्वेस्टमेंट्स, तो बी में टू इन्वेस्टमेंट्स। करेक्ट। हाँ करवा दूंगा, जेएलपी बता दूंगा, नोट्स बता दूंगा, उसके समझा दूंगा नोट्स के थ्रू। अदरवाइज जेएलपी बहुत बड़ा है। जेएलपी के नोट्स के फोटोग्राफ ले लेना, हो जाएगा उससे, मैं दिखा दूंगा। ठीक है ना। ना, उसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस। करेक्ट। फिर तो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस, फिर रिजर्व्स, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर स्पेशल एडजस्टमेंट, फिर रिवैल्यूएशन लॉस, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट में फिर बोला है बी को लोन में ट्रांसफर कर दिया, बीज लोन। बीज लोन में कितना जाएगा? 73,420। कितना जाएगा? 73,420। करेक्ट। बैलेंसिंग फिगर। एंड में बोला है टू बैलेंस कैरिड डाउन में कि टोटल कैपिटल 3 लाख का होना चाहिए, एंड दैट शुड बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलेगा तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलेगा तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। 90,000, 1,20,000, 90। करेक्ट चार्टर्ड। बीज लोन बैलेंसिंग फिगर है, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, बैलेंसिंग फिगर वैभवी जो कैपिटल अकाउंट में, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हमने। करेक्ट। अब ये कैपिटल अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, तो कैश बैंक से टैली कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट टैली नहीं हो रहा है तो कैश बैंक से टैली कर लेंगे। करेक्ट। ये बी लोन बैलेंसिंग फिगर है, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल करके बी का लोन आ गया। करेक्ट। 12,370 बैलेंसिंग फिगर ए का। चलो सी का बताओ कितना, सी का बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 3,950। डी का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? करेक्ट। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। कभी कभी सब में बोलते हैं कि बैंक की जगह करंट अकाउंट यूज करो, बैंक की जगह करंट अकाउंट यूज करो। तो यहां पर मुझे बैंक की जगह करंट अकाउंट लिखना होगा फिर। करेक्ट।
और ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट एसेट में आ जाएगा। सब में बहुत बार बोलते हैं कि बैंक यूज मत करो, करंट अकाउंट यूज करो। तो अगर करंट अकाउंट यूज करेंगे चार्टर्ड, तो बैलेंसिंग फिगर जो करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में वो एसेट में आएगा। और अगर बाई चांस करंट अकाउंट डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया तो वो लायबिलिटी में दिखा। करेक्ट। अगर करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो वो लायबिलिटी में जाएगा। तब ये बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। करेक्ट परमेश्वर। ना। ठीक है, चलिए इसके बाद बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में बोला है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करेक्ट। टू सी, टू डी। करेक्ट। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। चलो फटाफट बैलेंसिंग फिगर निकालो। 122 320। करेक्ट। ना। बैलेंस शीट। कैपिटल। ए का कैपिटल कितना? बी का कैपिटल कितना? नहीं सॉरी, सी का कैपिटल। डी का कैपिटल 90। बीज लोन 73 420। फिर एसेट। लैंड। लैंड बिल्डिंग 180। प्लांट एंड मशीनरी 323। इन्वेंट्री सॉरी, इन्वेंटरी, देन ट्रेड रिसीवेबल्स
Trade receivables is 125, 100. Bank. Correct, tell you. Now chat. इन्वेस्टमेंट तो ले गया ना, बी हैज टेकन अवे इन्वेस्टमेंट नो साहू ना। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, अगर सम में जर्नल एंट्री पास करने बोले तो भी आपको कैपिटल अकाउंट तक तो जाना ही। इवन इफ दे आस्क यू टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज चार्टर्ड, आपको कैपिटल अकाउंट तक जाना ही होगा। ट्रेड पेबल नहीं लिखा तो सॉरी, बीज लोन ट्रेड पेबल 193 और लॉन्ग टर्म लोन 4 lakhs. Correct. Even if they ask you to pass journal entries, if they ask you to pass journal entries, you have to go till capital account. Am I clear? And you have to pass all the journal entries of revaluation account and capital account. You have to pass all the journal entries of revaluation account and capital account. Am I clear? For example, this will become my entry number 1, investment to revaluation. This will become entry number 2, revaluation to building to PM to debtors. This will become entry number 3. Am I clear? 1 minute, Kashvi. Now, so you will pass all the entries of revaluation, that is first credit side, then debit side, and then profit or loss. So 3 entries. Then you will come to capital account. Capital account mein opening balance ka no entry. Then reserves and surplus is there, then that will be the next entry. Then this is entry number 4, goodwill. Entry number 5, investments taken over. Loss you have already passed. 6 is loan. 7 is bank. Closing balance ka no entry. So you have to pass all the entries of capital account and revaluation account. Correct. Great, Kash. Am I clear? So revaluation account and capital account में as many items are there, सबकी journal entries pass करनी. And that is a maximum journal entry there can be possible. Beyond that, single journal entry cannot be there. Am I clear? Revaluation account के 3 and partners capital account में whatever entries you see. Understood? Yes or no? No. इसमें कर दिया ना मैंने जर्नल एंट्री. देखो, फर्स्ट जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन. फर्स्ट जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन. सेकंड जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग टू पीएम टू डेटर्स. ठीक. थर्ड जर्नल एंट्रीज ए बी सी टू रिवैल्यूएशन. खत्म. अब इधर आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस की नो जर्नल एंट्री. फोर्थ जर्नल एंट्री, डी इज डेबिटेड, ए बी आर क्रेडिटेड. तो डी टू ए, डी अकाउंट डेबिट to B to C. Correct? Then B has taken over investment. So B to investments. Loss entry we had already passed. Then B to B's loan. B's capital to B's loan. And bank account debit to A to C to D. Correct? Now wait 1 minute.
1 मिनट, अभी जेएलपी का देखना है ना। Now you see JLP. Can you see on the screen? It's very big. Correct, but I can tell you this notes will really help you. All possible cases. ये जेएलपी का इंट्रोडक्शन। 1 मिनट आदिल, इज दिस क्लियर? जेएलपी का फर्स्ट नोट थ्योरी है इनिशियली। So this is types of JLP with two small questions. This is types of JLP with two small questions. Once again, if the asset is taken over and liability, what will be the effect of partnership capital? Sir, once again, say if asset is taken over liability. Liability to asset and difference will go to revaluation. D. Krishna. Asset, liability to asset and the difference will go to revaluation. ठीक है, this is types of JLP. अब ये treatment of JLP. In case of admission, if JLP is not surrendered, if JLP is surrendered. कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में तो वी विल अज्यूम दैट जेएलपी इज नॉट सरेंडर्ड। करेक्ट, उसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। आई एम श्योर इफ यू रीड द नोट्स केयरफुली आपको 100% सारे ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। 1 मिनट, अच्छे से फोटो ले लीजिए। आई होप यू वुड हैव टेकन। और ये स्पेशल केस है जेएलपी का, जो क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ क्लास वर्क सेक्शन में था। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ क्लास वर्क सेक्शन एडमिशन का। फिर ये सारी ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल की जगह रिवैल्यूएशन भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी, टेबल एंट्री जो लिखा हुआ है ना, मतलब जो अभी हमने गुडविल में किया था ना, वो टेबल बनाकर गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टी का मतलब होता है टेबल एंट्री एप्लीकेशन। दैट इज वो टेबल बना के करना है। डेथ करेंगे ना, एग्जाम करेंगे अभी। और ये वो सम है जो एमटीपी का एग्जाम एमटीपी में आया था, ट्रीटमेंट ऑफ
जेएलपी। इस बार मॉडल पेपर में भी आया था जेएलपी, वो यही था, कैप्सूल 26। एग्जाम में डेथ के आने के चांसेस कम है, बिकॉज लास्ट टाइम डेथ आया था। आई होप एवरीबडी वुड हैव टेकन ऑल द नोट्स ऑफ जेएलपी। May I remove the screen? Please, it's a request. It will take 1 hour. ये नोट तो मैंने दे दिए ना अभी, पूरे नहीं भेज सकता मैं। It will take 1.5 hour. Go through entire JLP. 100% बेटा समझ में आएगा। ये है ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी। फर्स्ट पेज में ये था। पहले थ्योरी का लो, फिर टाइप्स ऑफ जेएलपी दिखाता हूँ। ये फर्स्ट पेज का आधा पार्ट हुआ और ये फर्स्ट पेज का सेकंड पार्ट का। करेक्ट ना? अब ये डेथ वाला सब following with the balance sheet of OM. Following is the balance sheet of OM in which XYZ were partners sharing profit and losses in the ratio 1:2 as on 31st of March. मतलब बैलेंस शीट की डेट है 31st of March 2016। करेक्ट। इस बार जो जून 23 में समय आया था ना, वो भी इसी पर बेस्ड था। Z died on 31st December 2016. Z died on 31st December 2016. मार्च की बैलेंस शीट है Z died on 31st December 2016, मतलब he should get 9 months share of profit, that is April, May, June, July, August, September, October, November, December, 9 months profit मिलेगा। Am I clear? I will help you with presentation, don't worry Singh ji। Now 9 months share of profit, balance sheet, trade payables, bank loan, general reserve, capital, ABC, goodwill तो write off कर देनी है, building, computers, inventory, trade receivables, cash and bank and investments. Goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase on the basis of average profit of 3 years. 2 years purchase of average profit of 3 years. The profit and losses for the 3 years were detailed as below. Correct? 30,000 31st March, मतलब ये प्रॉफिट है 15-16 का। This profit is of 15-16. This profit is of 14-15 and this profit is of 13-14. Correct?
प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो 9 मंथ्स का प्रॉफिट निकालने के लिए शैल बी एसर्टेन्ड प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st of March, ये इंपॉर्टेंट, ये एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन. करेक्ट. ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st of March 2016, कार कॉस्टिंग, मतलब ईयर एंडिंग 15-16 की बात कर रहा है. A car costing 40,000 was purchased on 1/4, मतलब ईयर स्टार्टिंग में गाड़ी खरीदी. Debited to traveling expense account, on which depreciation is calculated at the rate of 20% per annum. The asset is to be brought into accounts and depreciated value. Depreciated value मतलब 40,000 की कार, 20% depreciated, तो वैल्यू हो जाएगी कार की कितनी, 32. सो कार अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 32. और एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो इट विल गो टू पीएल एडजस्टमेंट चार्टेड. एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो इट विल गो टू पीएल एडजस्टमेंट. करेक्ट. If the value of asset increases, it brings profit, and that profit will go to PL adjustment. Why? Because this is error. If this was not error, this would have gone to revaluation. Since this is an error, it will go to P&L adjustment. And फिर ये P&L adjustment का profit will be distributed between partners A, X, Y, and Z. 32,000. The other values of assets were agreed as this, and this. Trade receivables were all good. Very good. Calculate goodwill and Z's share of profit. ठीक है. Prepare revaluation account assuming other items of assets and liabilities remain same. Other items मतलब जो revalue हुई उसको छोड़कर, मतलब normal revaluation. Prepare partners capital account and balance sheet. Now, now. चले. Now, chapter. Number 1. Profit sharing ratio. X is to Y is to Z. इसी टाइप का सम 2023 में भी आया था. नहीं कुणाल, अदर बोला है. Other assets and values will remain same. Correct. Number 2. Valuation of goodwill. Now charted. Profit of 13-14. -10. Profit of 14-15.
Profit of 15, 16. 30,000. Add ROE मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 32,000 से जो कार बढ़ी. So this profit becomes 62. Total profit. बताऊंगा वापस. तो टोटल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट 72 divided by 3 years 24,000. Years of purchase. How many years of purchase? 2 years. Goodwill is equal to 48. Goodwill is equal to 48. Correct? Treatment of goodwill. Treatment of goodwill. Now chartered goodwill में there are 3 partners X, Y, Z. 3 partners X, Y, and Z. 48,000 is the value of goodwill. Old ratio is how much? 1:2:2. That is 9,600, 19,200, 19,200. Correct? One is to two. I will write off Kashi. 1 minute. 16,000, 32,000. कोई भी admission, retirement, death, admission, come retirement, treatment of goodwill is this only. Gaining partner to sacrificing partner. 6,400 gain. 9,600 से 16,000 हो गया. 19,200 से 32,000. So 12,800 gain. 19,200 sacrifice. Correct? Now charted जो book value of goodwill है that should also be written off. Book value of goodwill है that should also be written off. Goodwill valuation तो nothing. 3 years का profit Vivo. 3 years का profit add rectification of error 32,000. So 62. Total profit, average profit, years of purchase. That is simple only. So book value of goodwill should be written off. The value of goodwill that is appearing in the balance sheet should be written off. Goodwill appearing in the balance sheet is 30,000. Journal entry X account debit 6,000. Y account debit. Z account debit. $30,000. Correct? This is becoming 1:2:2. 1:2:2. Correct? Now charted. B. Gaining partner to sacrificing partner. X is gaining 6,400. Y is gaining 12,800 to Z. This is old share. This is new share.
Old share minus new share will give you gain or sacrifice. Am I clear? So treatment of goodwill may first you write off book value, and second you pass the journal entry gaining partner to sacrificing part. Now charted number 4. Special adjustment. Special adjustment. Now special adjustment means who is retiring? Who is dying? Z. That means Z's share of profit of 9 months for 16-17. Z's share of profit of 9 months for 16-17. Correct? Now, according to question ने कहा है कि profit of 16-17 आपको average profit लेना है. So average profit of 16-17 is nothing but average profit, or average profit we had calculated is 24,000 charted. Average profit we calculated is how much? 24,000. Correct? Now charted, उसके बाद Z's share of profit 24,000 is full year's profit. Into 9 by 12, 24,000 into 9 by 12. Correct? Into 24,000 into 9 by 12 into Z's share. Z's share is how much? 2 by 5. 24,000 into 9 by 12 into 2 by 5. That is 7,200. So Z should get 9 months profit. That 9 months profit ka journal entry is PL suspense to Z. PL suspense to Z. This PL suspense will come in asset. And this will come in capital account credit side. And this will come in capital account credit side. Am I clear? Second is rectification of error. Rectification of error. Now, there was a car of 40,000. There was a car of 40,000 which they purchased but they did not record. There was a car of 40,000 which they purchased but did not record. They realized this at the end of the year. End of the year, when you record car, so it will become car account debit 40,000 and depreciation is 20%. Two, PL adjustment 32,000. To PL adjustment 32, and this PL adjustment will be distributed to X, to Y, to Z. In which ratio? Old ratio 1:2:2.
So this is rectification of error. Car is an asset. Asset increasing, it creates a profit. So profit is credited to PL adjustment. Why PL adjustment? Because this is revaluation. This rectification is done on year end. Am I clear? So these are your special adjustments. Thereafter, number 5. Revaluation account. Revaluation account में chartered building is increasing by 20,000. Building is increasing by 20,000. So credit. If you are happy, credit. If you are sad, debit. Then investment is decreasing, sad, debit. How much? 4,000. To computer. To computer, how much? 30,000. To inventory, which is decreasing, 4,000. So investment in computer. And chartered, there is a new drama. Can you tell me what else will come in revaluation? Can you tell me what else will come in revaluation? Building has come, investment has come, computer has come, inventory has come. Depreciation of car, superb. Depreciation of car will come. This car, 32,000 into, very good, 20% for how many months? This depreciation of car, very good. Depreciation. So many people told me, very good. Depreciation for how many months? 9 months. Because he died after 9 months. So 9 months ka depreciation will come. Can you tell me how much? Can you tell me how much depreciation? $4,800. Why 8,000? 4,800, no? Ashwin. कमीशन वाला एग्जाम्पल में एवरेज प्रॉफिट को क्यों नहीं ऐड करते? विच वन यू आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा? मुझे पता नहीं ना. अब बताओ चार्टर्ड प्रॉफिट या लॉस? बाय लॉस 22,800. 22,800 will be distributed X, Y, Z in the ratio 1:2:2. It is 460,9920. Correct? $22,800 to 2 divided by 9120. And 4560. Correct? 4560. Chalo. Now, after this, you'll prepare capital account.
Partners capital account. Correct? 4, 5, 6. First we'll write opening balance. Correct? 40, 80, 80. So this. Now, after this, there is general reserve in the balance sheet of how much? 30,000. We'll distribute general reserve. First is capital, first is opening balance, then reserves. How much? 30,000. So 6, 12, 12. Correct? So first opening balance, then reserves. Third is treatment of goodwill. X, Y, Z to goodwill. How much? 6, 12, 12. Correct? 6, 12, 12. After that charted X, Y to Z. In this question, goodwill mein bonus should be subtracted. Institute has not subtracted. In revised solution, they have. So you will consider that. Then charted X, Y to Z. X, Y to Z. X is debited 6, 4. Y is debited 12,800. By X and Y. Z credit 19,200. So treatment of goodwill done. Then special adjustment. PL suspense to Z. By PL suspense. I have made you write which order? First capital, then reserve, then treatment of goodwill, then special adjustment, then revaluation. So special adjustment में PL suspense 7,200 by PL adjustment 6400 6400 12,800. Correct? Then revaluation loss special adjustment go ahead. $9,120. Correct? Z has died. So Z ka capital, first capital, second reserves we did, third treatment of goodwill, fourth special adjustment, fifth revaluation, and sixth capital adjustment. So two executors. Z ka balance of executor, please find out. No, sir, capital. Sorry, losses. Y also 12,000. Sir, please find out Z ka executor. 1,10,080. 1,10,080. Check. I doubt this is.
Is this correct? And two balance carried down. Two balance carried down. X का 70,000. Yes. No. Why is 70,880? And X. Y तो I got it. Z. So X 35,440. This is balancing figures. Correct? 7. Balance sheet. Balance sheet. Trade payables. The way they have written, I will write the balance sheet in the same fashion. They started with trade payables. I am also starting with trade payables. Then B is loan. Then capital is reserves is gone. So Z's executors 1,10,080. Then X is capital 35,440. Y's capital 70,880. Then building 1,40,000. Then computers. Then computers 50,000. Then inventories. Inventories 16,000. Thereafter, trade receivables. Trade receivables is 20,000. Then cash at bank 20,000. Then investment. How much? 6,000. Then car 32 less 4,800. 27,200. Then PL suspense. Correct? Total arena liability of total asset. No need to show. Vidhi 286 for. Correct? So I hope you understood how to go about 286 400. This was a type of question which came last attempt for 15 marks. And guarantee had come last attempt for 5 marks. So total partnership came for 20 marks. Am I clear? What is this? Yash Ashiani. You are from? Yash Sahab?
You could not see the screen on which I wrote the balance sheet. Why 4,800 from car? That is depreciation on car for the current year 12 months. Current year 8 months. Gujarat. Okay, me too, Gujarati. Current year का depreciation, Harsh Shukla. Saurabh, now can you see the screen? કઈ બાજુથી રાજકોટ પણ અત્યારે બેંગ્લોર રહેવાનું ચલ શું વાત અને આમ રાજકોટની પાસે ગામ છે વડોદરી બાપ દાદા માના શું વાત જો now partnership done શું વાત કરસ મજા પડી ગઈ company accounts correct ચોક્કસ company accounts I think everybody would have done in the 12th standard correct yes no तो company accounts तो easy Akanksha no which board you studied X Limited issued shares of rupees 10 each. Payment schedule was 3322. A, to whom 3,000 shares were allotted, failed to pay allotment and first call, and his shares were immediately forfeited. B, to whom 2,000 shares were allotted, failed to pay both the calls. All the forfeited shares were reissued at later date. Show the forfeiture and reissue entries. Now chartered. બધા કરાવી લેશું સાનિયા दोनों कर लेंगे सेकंड थर्ड दोनों ना ना now chartered there is Mr. A application 3 allotment 3 first call 2 second call 2 he paid this he failed to pay allotment and first call and his shares were forfeited here so called up value કેટલી 8 unpaid value 5 paid value 3 correct now the journal entry for forfeiture is equity share capital 2 calls in arrear 2 share forfeiture correct called up unpaid paid cup called up unpaid paid so A ka called up is 33628 that is 3,000 into 8 unpaid 3,000 into 3 paid 3,000 into 5 so this is 24,000
This is 9,000. This is 15,000. Correct? Now, B. 3322. Fail. He paid application. He paid allotment. He did not pay. Both the calls and his shares were forfeited here. So called up value is how much? 10, 3, 3, 6, 8, 10. Unpaid is how much? 4 and paid is how much? 6. So forfeiture का entry is equity share capital. 2 calls in arrear. To share forfeiture. So this is reverse happened. No? Unpaid is 5 and paid is 3. 15, 9. Over here, called up, unpaid, paid. How many shares? 2,000 into 10. 2,000 into 4. 2,000 into 6. 20,000. 8,000. 12,000. All the shares are reissued. All the shares are reissued at 8. So bank account debit 5,000 into 8. 10 rupees ka shares are reissued at 8 rupees. 10 rupees ka shares are reissued at 8 rupees chartered. That means 2 rupees is discount. 10 rupees ka shares are reissued at 8 rupees. That means 2 rupees is discount. That discount is known as share forfeiture. Correct? To equity share capital. Correct? Then share forfeiture to capital reserve for A for B. A का paid amount is how much? 3 and B का paid amount is 6. A का discount on reissue is 2 rupees and 2 rupees. तो A में 3 rupees we gained, 2 rupees lost, तो net gain 1. 6 rupees gained, 2 rupees lost, so net gain 4. How many shares are reissued? Shares reissued. How much? Shares reissued. How much? नहीं वैसे नहीं देखते रीइश्यू के समय डिस्काउंट देखते सौरभ 3,000 बी का 2,000 सो 3,000 प्लस बी का 8,000 तो हो गया 11 Am I clear? Please do not do credit share forfeiture minus debit share forfeiture. That is possible only if all the forfeited shares are reissued. इसमें मैच हो जाएगा because all the forfeited shares are reissued. Otherwise मैच नहीं होगा. Am I clear? Understood, chartered? Any doubt? Anywhere? Well, shall we move ahead?
एक बार रिकैप करो। 3322, ए ने 3 दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो टोटल कॉल्ड अप 3 + 3 6 + 2 8, अनपेड इज 5, पेड इज 3। ये जर्नल एंट्री है जिसमें कॉल्ड अप, अनपेड, पेड फॉलो करना है। बी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया, तो उसका कॉल्ड अप फुल 10, अनपेड 2 + 2 4, पेड इज 6, 3 + 3। सेम लॉजिक यहाँ, इसका 3000 शेयर्स, बी का 2000 शेयर्स, 5000 शेयर्स री इश्यू किया 8 रुपीज, 10 रुपए का शेयर री इश्यू किया 8 रुपीज में, 2 रुपीज डिस्काउंट जो शेयर फॉर फ्यूचर में, टू शेयर कैपिटल 10। ए में फायदा हुआ पेड अमाउंट का 3 रुपीज का, बी में फायदा हुआ पेड अमाउंट 6 रुपीज, लॉस 2 रुपीज लॉस, डिस्काउंट ऑन री इश्यू, तो दिस इज नेट गेन। नेट गेन 1 and 4। What notes to accounts you are saying? I'm not understanding only, Vignesh. Because notes to accounts are there in company accounts, final account, which is not there in your syllabus. 1 and 4, shares reissued. 1 gain 3000 reissued, 4 gain 2000 reissued. Multiply करके total capital reserve. चलो, now can we take 2 minutes break? Just 2 minutes. 2 minutes break.
Now, now, D Limited issued 2 lakh shares of rupees 100 each at a premium of 20 rupees. Per share payable, application cut 20, allotment 50 including premium. 30 plus 20. First call 30, second and final call 20. Now charter. Applications were received for 3 lakh shares and pro rata allotment was made to 2 lakh 40. मतलब 3 लाख में से 2 लाख 40 को प्रो राटा हुआ, मतलब 60,000 को रिफंड कर दिया. 3 लाख माइनस 2 लाख 40, 60,000 इज रिफंडेड. यस और नो? Money excess received on application of 2 lakh 40 was employed on account of sum due on allotment as a part of share capital. अच्छा. Now chartered, the excess जो पैसा था that was adjusted on allotment. E to whom 4,000 shares were allotted failed to pay allotment money, and on his subsequent failure to pay first call, his shares were forfeited. F, the holder of 6,000 shares, failed to pay 2 calls and his shares were forfeited after second call. ठीक है. Of the forfeited shares, अच्छा, E failed to pay first call and his shares were forfeited. F, the holder, failed to pay 2 calls. Of the forfeited shares, 8,000 shares were issued to G at a discount of 10%. All of E's shares were forfeited. Now chartered. But the first entry will be bank account debit to share application. Bank account debit to share application. How much? 3 lakh into 20. Application is tell me chartered. Application is how much? 20 rupees. So that comes to how much? 60 lakhs. $60 lakhs. Correct? Thereafter. Number 2. Share application 3 lakh into 20 tha 60 lakhs. Out of which how much we have refunded? How much we have refunded? 60,000 into 20. That is 12 lakh we have refunded. Yes or no? To equity share capital, we have allotted only 2 lakh shares. Applied, allotted
Those who had applied for 2,40,000 shares, chartered, we have allotted them 2 lakh shares only. Correct? The allotment 2 lakh into 20, that is 40 lakhs. And rest is adjusted on allotment. How much? 60 minus 42. 60 minus 42, 52, 8 lakhs. Correct? Now, एक चीज देखो चलो, कंपनी के पास एक्सेस अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना हुआ? 8 lakhs. Is this clear? Yes or no? Now, 40,000 शेयर्स पर 20 रुपीज करके हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया. करेक्ट? मतलब अलॉटमेंट में 8 लाख रुपीज कंपनी विल रिसीव लेस. कंपनी विल रिसीव लेस. कंपनी विल रिसीव rupees 8 lakh less on allotment since company received rupees 8 lakh excess on application. Am I clear? I hope this is correct. Yes, no. Now, then I'll ask share allotment ka money. Share allotment, I will ask from how many shares? 2 lakh shares. So 2 lakh shares per 50 rupees, that is 100 lakhs I will ask on allotment. To equity share capital, 2 lakh into 2 lakh into 30. 60 lakh is towards capital, and to security premium 2 lakh into 20. Correct? Number 4. Bank account debit calls in arrear account debit to share allotment. To share allotment, I will have 92 lakhs. Why? Because out of 100 lakhs, company will receive 8 lakh rupees less. Company will receive 8 lakh rupees less. Company will receive 8 lakh rupees less. Correct? Why? Because company had received 8 lakh rupees extra on allotment. Understood? Now, chartered, look at E. E का ध्यान से देखो. Applied, allotted. E. E has got how many shares? Those applied 2,40,000 got 2 lakh shares. Therefore, ratio is 6:4. Those who had applied for 6 shares got 4 shares. If E has got 2,000 shares, sorry, E has got 4,000 shares. Therefore, E had applied for how many shares? 6. 6,000 shares.
Therefore, E had applied for 6,000 shares. E had applied for 6,000 shares, but he got only 4,000 shares. Is this part clear, everybody? E had applied for 6,000 shares, but he got 4,000 shares. Now, E paid on application. He would have paid 4,000 into 20. Sorry. 6,000 into 20. He paid. 6,000 into 20 is 1,20,000. He paid. E was required to pay. E was required to pay only on 4,000 shares 20 rupees. E was required to pay 4,000 shares for 20 rupees, that is 80,000, yes or no? So excess is how much? Excess is how much? 40. E had paid excess 40,000 rupees on application. सेकंड जर्नल एंट्री में तो कुछ नहीं है. 3 लाख शेयर्स में से 60 रिफंड हो गया, 2 लाख शेयर्स अलॉट हुआ, और 40,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा था दैट वी आर एडजस्टिंग इन अलॉटमेंट. करेक्ट हर्ष शुक्ला? 3 लाख शेयर्स में से 60 को रिफंड कर दिया, 2 लाख शेयर्स अलॉट हुआ, एक्स्ट्रा 40,000 शेयर्स का जो पैसा था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया. करेक्ट? सी, E required to pay on allotment. E required to pay on allotment 4,000 1 minute. Is this correct calculation? ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया. Ratio is coming to 24:20. वो better. Now, E has been allotted 4,000 shares. E has been allotted 4,000 shares. So you would have applied for how many shares? 4,000 into 24 divided by 20. 4,000 into 24 divided by 20. 4,800 shares E would have applied. He applied 4,800 shares, but he got how many shares? 4,000 only. So excess how many shares? 800 shares. E paid on application 4,800 into 20, 96,000 he paid. But E was to pay only 4,000 shares per 20 rupees he was supposed to pay, that is 80,000. So excess he paid how much? He paid excess 16,000 on application. He paid excess 16,000 on application. E to pay on allotment 4,000 shares per 50 rupees, that is 2 lakh rupees he was supposed to pay on allotment. Excess
which he had paid 16,000 rupees subtract कर देता है. So still he is supposed to pay 1,84,000 which he did not pay. That is calls in arrear. Understood, chatted? He paid on application 96,000. He was supposed to pay 80,000 because he was allotted only 4,000 shares. The excess he has paid is how much? 16,000. Allotment may he was supposed to pay 4,000 shares per 50 rupees, that is 2 lakh rupees. This excess will be adjusted. That means he was still supposed to pay 184, which he did not pay. So calls in arrear of E. Calls in arrear of E is how much? 1,84,000. That means 90,16,000. 90,16,000 he received. Am I clear? Everybody understood this entry? Yes, no. Shall I move ahead? Calculation A, B, C, everybody understood? Number 5. Share first called to. Share first called to equity share capital. How many shares are there? 2 lakh shares. First call is 30 rupees. First call is 30 rupees. Correct, solve. So 2 lakh into 30 is how much? 60 lakhs. 60 lakhs. Correct. Share first call to equity share capital 60 lakhs. 60 lakhs. 6. बैंक E के पास 4,000 shares, F के पास 6,000. तो E and F both did not pay first call. तो first call we received only on 1,90,000 shares. E ने भी first call नहीं दिया, F ने भी first call नहीं दिया. E के पास how many shares? E के पास how many shares? 4. F के पास 6. 4 plus 6, 10,000 shares ने पैसे नहीं दिया. That means 1,90,000 gave, that is 57 lakhs. Calls in arrear 10,000 into 30, 3 lakhs. Correct. To share first call 60 lakhs. Am I clear? इसके बाद share forfeiture of E. E का shares are forfeited. Now charted. Equity share capital, 2 calls in arrear, 2 share forfeiture. Now E का फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है. करेक्ट ना? So this will become E has 4,000 shares. Called up value is 80. Called up unpaid paid. Called up value is 80. That is 3,20,000. 2 calls in arrear. 2 share forfeiture. Now chartered. अब थोड़ा दिमाग लगे. E की बात कर. This was application 20. This is 30 plus 20. First call is 30. E ने ये पे किया है. Allotment भी पे नहीं किया. First call भी पे नहीं किया. Correct?
तो प्रीमियम इज पेड, तो कॉल्ट अप वैल्यू कितनी होगी? 80। प्रीमियम पे किया या नहीं किया? नहीं किया। अगर प्रीमियम पे नहीं किया तो डेबिट करना होगा। इफ प्रीमियम इज नॉट पेड इट शुड बी डेबिटेड। तो 4000 इंटू prepaid if not paid. Yes, Veer. Premium if not paid debited. Yes, no. Calls in arrear. उसने पहले 184 नहीं दिए ई ने, अलॉटमेंट के 1,84,000 नहीं दिए, और 4000 शेयर्स पर 30 रुपीज, 4000 शेयर्स पर 30 रुपीज फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। तो ई हाउ मच? 1,84,000 प्लस 1,20,000, 304 he did not pay. So how much he paid? 96 बैलेंसिंग फिगर। क्या मैं इस 96 को लिख सकता हूं 4000 इंटू वॉट इज 96? 4000 into what is 96? 24. That means per share he has paid 24. Is this clear? Per share he has paid 24. Am I clear? Very good. Now, then you will call second call. But second call may E say, will you call? You will ask, you will not ask. You will not ask. Why? Because E ka share is forfeited. So share second call to equity share capital. You will ask money only from 1,96,000 into 1,96,000 into 20 rupees. That is 39,20,000. Correct? Yes, sir. No, sir. Thereafter, bank account debit. E and F both did not pay into 20, that is 38 lakhs. Calls in arrear. F. Calls in arrear. F. 6,000 shares per 20 rupees. He did not pay. Two share second call. Am I clear? Out of 196, 6,000 F did not pay, so 1,90,000 ka money we received. Correct, incorrect? Thereafter, forfeiture of F. Now charted 20, 30 plus 20, 30, 20. He paid this, he paid this, he did not pay, he did not pay. So called as 100. Security premium will be debited? No. Why? Because he paid security premium. Security premium will be debited.
will be paid only if it is not paid. Unpaid 50, paid 20 plus 20 paid, excluding the premium. This should be excluding security premium. 2 calls in arrear, 2 share forfeiture. Unpaid, paid. Called up, paid, paid. Everybody will now 6,000 into called up 100, 60,000. 6,000 into unpaid 50, 30,000. 6,000 into paid 50. All shares are reissued and F that way total 8,000 shares reissued. 1,000 shares are 90. Correct. Share forfeiture 8,000 into 10. Then capital reserve. Capital reserve. Now, share forfeiture to capital 10 rupees, 40 rupees. 4,000 shares are issued, 4,000 shares are issued, 1 lakh.
So E का paid is 24, F का paid is 50. E का paid 24 we had calculated over here. And 96,000 he has total paid on 4,000 shares. Therefore, each share per he has paid 24 rupees. So 24 paid 50. Therefore, net gain 14, net gain 40. Number of shares reissued 4,000. Number of shares reissued 4,000. 56, 1 lakh 60. Total capital of 2 lakh 60. Am I clear? Yes, no. Correct chartered? ना अब कुछ इम्पोर्टेंट बताते हैं. Correct, देखिए. This PDF I will share. Are you able to hear? First thing. Now you are able to hear. Kashvi, shall I move ahead? 15 minutes. Your papers of 3 hours, 15 minutes. 3 hours is your writing time, 15 minutes is your reading. Correct? In this, you are supposed to do 3 things. Listen very, very carefully. 3 things. Number A, write chapter name. Vignesh, any doubt? दूसरी बात चार्टर. Second thing, decide which question to leave. Decide which question to leave. That means decide in order which or each. Screen. 'I can assure you this at least 5 minutes to read it through. One minute, Rishi.
Now you are able to hear? Are you able to hear? Yes. Now, the first 15 minutes में three things. Write the chapter beside each question pencil से. Decide which question you will not attempt. And then you will get 4 to 5 minutes to read true or false. Correct? But before doing all this, make sure that you fill your sheets, your roll number, your name, which you're supposed to write on the sheet. You write it very, very neatly. Correct? So first thing is roll number in number and words. Both should be very clearly written. Correct? After that, charted in 3 hours. Question number 1, attempt first. It is, believe me, it is mandatory that you are supposed to attempt question number 1 only first. Correct? True and false, 4 marks ka theory and 4 marks ka practical question will come. So 20 marks is over there. And believe me, true and false, out of, if you don't read anything in true and false, just whatever chapters you have studied, on that basis only, class notes only, if you write, if you go in the exam, you will be able to attempt 80%. Matlab out of 6 true or false, 4 to minimum you will be able to attempt without reading anything extra. Am I correct? Number 1. Number 2. So for theory, you are not supposed to read anything extra apart from JKSC material. Nothing more, nothing less. Your class notes. That would be sufficient. Am I clear? Especially theoretical framework is important. Inventory valuation ka theory is important. Final account ka theory is important. Correct? Bills of exchange ka theory is important. Rectification of errors ka theory is important. This theory, if you can read from JKSC material, that is sufficient. Theoretical framework, inventory valuation, final accounts, bills of exchange, and rectification of errors for those 4 marks extra theory, which comes. Classrooms, that is sufficient. Nothing more for the theory. Correct? So please attempt first question first. Second chartered, in second hour, try to attempt non-balance sheet questions. I would prefer, first, I would always prefer rectification of errors because every entry will give me marks. So part marks is very heavy. Rectification of errors, inventory valuation, BRS, bills of exchange, depreciation, consignment. These are few chapters which I would always look for to first attempt because these are my strongholds. For some, consignment is difficult. For some, bills of exchange might be difficult, but other chapters are relevantly easy for everybody. Then chartered, third, you try to go for, in third, you try to go for company. I can take company if it comes for 20 marks in the second hour only, because company is easy. It may be lengthy because you cannot write short forms. Then fourth, I would go for final accounts, partnership, and NPO. This would be my strategy to attempt. Correct? After this chartered, consignment, first question is always question number 1. Then try to attempt non-balance sheet questions according to your comfort zone. Then try to go for NPO, final accounts, or partnership. Am I clear? Now chartered. Presentation.
प्रेजेंटेशन में नो शॉर्ट फॉर्म्स except BD, CD, A by C, DR, CR. You cannot use any other short form. Correct? All journal entry, no Trisha, must have narration. All journal entry must have narration. Suppose other short form you can use is provision for discount on debtors, discount, PDD, RDD, but that too if you are helpless. Otherwise, write like this: provision for doubtful debtors. Write some short form, some full form, because the institute does not use short forms. Correct? All journal entries must have narration. Now, narration must not be some rocket science correct narration. Write something random in one line. Write something. That's it. If you do not understand anything, copy the question. But narration is mandatory. Am I clear? Now, suppose these are 2 pages. Page 1, page 2. Final accounts, you can do it in 2 page. Account current में debit side over here, credit side over here. Partnership में partners capital account, debit side over here, credit side over here, you can do. Correct? Do not scribble. That is scratch. The more you scratch, the more marks you lose. Total every ledger account and balance sheet except working notes. Working notes में you can use short forms also. Except working notes. Am I clear? Do not use calci with tax plus, tax minus, or 000. Correct? I'll send you this paper, Nirav. Correct? Now, thereafter, please first tie your extra sheet, then write. Because sometimes what happens, last minute you do not get time to tie your sheet only. And some people tie it sadly. If some people tie it sadly, no. Then if that is not taken over, one paper is not checked only. Yes, Shivanti, you can do. Now, all calculations must be shown. You cannot do anything in the calculator and just write it. 4 into 2 is equal to 8. That also, yes, extra sheets will be given. 4 into 2, which you are doing, that also has to be shown in the examination. You can strike it out, but strike out is try to do it least possible. Extra sheets will be given. Strike out least possible. All calculation must be shown. Correct? Now, please write necessary assumptions. Please write necessary assumptions wherever. No, they will give you a thread to type, Nirav. Now, no short forms. Narration must. Correct. You can use 2 pages. Do not scribble or scratch. Can attempt question in any order. Can attempt question in any. Yes, I will send it.
can attempt question in any order, but in any order, but subparts should be together. You can attempt 1, then 5, then 3. But 2A, then 3B, no. Don't leave spaces also and go. You did 2A, 2B, 2C ka space you left, and then you went to 3, thinking that you will come back. You will never be able to come back. Correct? So can attempt questions in any order, but subparts should be together. Now, chatter. $36,000 was unused in the business for day-to-day. Again, there is a 7:30 pay doubt session over that time. You can ask the doubts. Can we use punch to paper? They will give you that thread. Don't worry. No, you can do it, Shubham. Not a problem. एक पेज में भी करो, 2 पेज में भी करो, but otherwise account करंट बहुत छोटा छोटा हो जाता है, बहुत small it becomes. Any calculator without tax plus, tax minus and 000 is allowed. Exam में board is allowed? No. Every question in fresh page. Exam में right. Side में मत लिखना answer, question, right? Solution to question number ... underline and then start the solution. Journal का format is date, particulars, debit, credit. That's it. Ledger का format, if dates are not there, otherwise particulars, amount. If dates are there, then you prepare date column. Particulars, amount. Study accounting process nicely. Correct? Yes, Jitendra Kumar. LF column not required. So now what should we prepare? JKC material, model questions. JKC material is more than sufficient. Much more than sufficient. Every year, more than 80 marks paper has come from JKC. More than 80 marks. Journal date is not given, leave it. If journal में date is not given, leave it. Yes, Jitendra, you are correct. Now, last moment I would require is go through your class notes. Whichever question you felt it was tricky, just go through that. Relax. Confidence is very, very important. Now, chatted, I'll tell you one thing. That Trisha, that question will not come, and that question is very similar to that question which we did now. So obviously, last attempt ka question will never be repeated now. So that is advantage for us. Correct, no, Trisha? 55-60% आ जाएगा शुभम. Now, if you still want, I can show it at 7:30. If you are hell bent that that question will only come if you believe that the question which came last attempt, same question will come this time. That is not possible. If you still believe, I can do it. And that solution is also there. No? Now, listen to me very carefully. Obviously, first exam is always nervousness. First exam is always tension. But I have always believed that all battles are first won from mind, then in the battlefield. So until and unless you are confident that you will clear, you will never clear. So please, it's a request. Don't get into anxiety mode. The more anxiety you have, the more silly mistakes you make. Be confident that you will pass. You are not supposed to know entire 100 marks paper. If you know 30-40 marks thoroughly, even if you know 30-40 marks thoroughly, if out of 125 marks of paper,
If you know 30 marks very nicely, you will get 30 out of that 30, where you can get 27. 30 marks, that is 1/4 of the paper. Understand this strategy. Out of 125 marks, you should know 30 marks very thoroughly, where an examiner cannot put point also. So you get remaining 50 marks. If you know average, you will get out of 50 20, and then remaining 20 may say, where you don't know anything, you write rubbish, you will get 5. Still charted, you get 50 plus. So failing requires talent in examination. Only pressure can make you fail. There is no weightage. Weightage of theory is only 4 marks in the first question and true or false. There is no other weightage. Correct. So you don't have to know the entire paper. Be smart. If you know 30 marks, search that 30 marks which you know very nice. That 30 may say examiner should give you 27, 28. That nicely. And that much is expected out of 125, 30 marks, so you should know. Remaining 50, even if you know average, you will pull out 20%. That is 40 marks, 40% marks. Sir, the 27 plus 20, 47. Even if I consider remaining paper, say 5 marks you get, you still end up with 50 plus. Correct? So it's a request. Please plan yourself nicely. Don't get panicked in examination. And the questions which you're asking, sir, what are the chances of asset disposal method? Very rare. They have still, if they ask you asset disposal, the sum will be very small and easy. Revision के लिए, what about, सर थ्योरी के लिए कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं अभी? अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कल एग्जाम है बेटा. मैंने बोला ना, जेकेएससी मटेरियल खाली देख लो, ट्रू एंड फॉल्स आई कैन गारंटी. वॉट एवर यू नो, इफ यू गो एंड revise that, only it will be done. And today, guys, whatever I have done, that I'll send it in the group. Sir, can we solve MTP, RTP, anything? RTP, you can solve this attempt, one paper. That would be sufficient. Go through true and false of MTP, RTP randomly. That would be more than sufficient. Go through true and false of MTP, RTP. It will take 2.5 hours. Your theory is done. Sir, is it necessary to make 2 columns in balance sheet? No. Chance of epoch method, rare. JLP, it has never come. JLP ka notes I have shared, that is sufficient. Correct? You still have a doubt session at 7:30. So any other doubts you have? Sir, asset disposal account is mandatory to create? No. Sir, can we skip NPO? Yeah, you can. But that is the only chapter you have skipped, I assume. Sir, 6 साल 5 पेपर्स ट्रू और फॉल्स कर लूं तो हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा शुरू. More than enough. True and false, if you just go through MTP, RTP, past exam, every paper has 6 true and false. It will take 2 hours to go through everything. And that will give you sure shot 12 marks. What else you require? Don't have to pester or take pressure about theory. The one chapter, if you are skipping Kashfi, you can. But LIFO FIFO वाला part कर लेना चाहिए. Whatever you know, that much you do it. चले? Thank you so much. Anything else? I'll send this paper. Inventory में generally that stock reconciliation comes. Thank you, Veer. Thank you, Rutvik. Jill, what was your doubt? I did not see. सर इस बार जेएलपी आने के चांसेस कितने परसेंटेज होंगे? एक पार्टनरशिप के क्वेश्चन में एडजस्टमेंट जेएलपी, तो इट माइट कम. You cannot say, will the paper be different as it will be the? No, it will not be different, Trisha. It will be same. It will be easy. You can go. So sale or return 4 mark का आता है.
थैंक यू करण बाबा। सर पार्टनरशिप में अप्रोप्रिएशन आएगा क्या? आ सकता है, इजी है वो भी। ठीक है जी। मतलब तुमको इतना डर क्यों है जेल के से? एडजस्टमेंट में आ सकता है और क्या। And if you attended lectures, if you go through the capsules, it's sufficient, more than sufficient. Sir, this was very understandable, sir. Thank you, Arshita. Okay, thank you, Jill. Thank you so much. God bless you. All the best. I hope this session was helpful. Bye bye.